नमस्कार जय माटी साहब, नमस्कार मजूमदार दादा, प्रदीप भाई ऊपर आ जाओ। मजूमदार दादा, बीबी दादा, सब दोनों को प्रणाम। नमस्कार जी, प्रणाम। तो आज हम लोग थोड़ा इतिहास में जो लिपा पोती हुई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वही जो किताब हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें महाराणा के बारे में बताया गया था, उसके 18वां चैप्टर में उन्होंने बोला है कि भाई ठीक है, इतिहास को किस तरीके से घुमाया गया है और हिंदुओं के ऊपर इस्लामिस्ट ये जो इन्वेडर थे, इन लोगों ने 1000 साल तक जो राज किया है वो झूठ बोल रहे हैं और हमारे हिंदुओं को मतलब दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम यू आर इंफीरियर कॉम। उसके बारे में था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 2-3 एक चैप्टर और हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो मैं बोला इसको भी थोड़ा शेयर कर देते हैं पब्लिक के साथ में। आज की डेट में जो हम लोगों ने झेला है, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, वो तो गया, अब तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड सन्स को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को तो बता ही सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इतिहास में गलत लिखा हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट जब चेंज करेगी सिलेबस उस समय तो बात अलग है, लेकिन हम घर में तो कहानी बता ही सकते हैं। कौन सा इतिहास में हमारे क्लासेस में बताया जाता है कि रामचंद्र जी किसके पुत्र थे और रामचंद्र जी ने क्या किया था, वो भी तो उठपटांग बजाता है, लेकिन फिर भी हम लोग घर में तो बताते ही है ना कि राम ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने क्या किया, या विष्णु ने क्या किया, प्रहलाद ने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने क्या किया। तो इसी तरीके से बच्चों को तो हम बता ही सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। जब कुछ जमाना चेंज होगा और गवर्नमेंट के दिमाग में आएगा तो शायद वो अपने किताबों में भी और कहीं पर भी हिस्ट्री को चेंज करवाएंगी। तब तक हम लोग अपना फर्ज निभाना चाहते हैं कि भाई ठीक है, अगर रत्नू साहब ने इतनी मेहनत किया है तो उसको भी आपके सामने लाना जरूरी है। हम लोग उस किताब को पूरा तो कवर किए हैं, लेकिन ये भी उनका एक 2-3 चैप्टर है जिसमें उन्होंने इतिहास को लिपा पोती कैसे हुई है उसको कवर किया है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग भी इसको बताएं पब्लिक के सामने, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। तो काफी अच्छा लिखा है उन्होंने और मतलब आई एम प्रिविलेज कि ये चीजें हमारे सामने इस समय इंटरनेट की वजह से मिल पा रही हैं। अदरवाइज तो जिस समय इंटरनेट नहीं था हमारे पास में ज्ञान तो कुछ मिलता ही नहीं था, बहुत मुश्किल से था। ये सॉरी 18 चैप्टर नहीं है, 17 चैप्टर है ये, तो मैं इसको शेयर करता हूँ। सॉरी अगर डिले जो हुआ है हमारा वो किसी टेक्निकल कारण से हुआ था, वो हमारे पैनलिस्ट को मालूम है वो टेक्निकल कारण क्या हो सकते हैं। बाकी अगर व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे तो उनसे हमारे को हमें मतलब वो हमें क्षमा कर दें, क्या और बोल सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं और उनको आपको झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। तथा ये सामने आ गया है आपके द लाइज ऑफ 30 years ऑफ हिंदू स्लेवरी करके आया है। तो इसमें हमारे रत्नू साहब जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, although there is no historical data to validate this claim, but how often do we get to hear this phrase, thousands years of Hindu slavery under Islamic ruler? ये हमेशा हमारे को सुनाया जाता है। और हमारे जो एक पार्टी है जिसने करीब 65 ईयर तक राज किया था, वो तो हमेशा उन्हीं की चमचागिरी करती रहती है और उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी हमारे को बोलते हैं कि भाई हमने तुम्हारे इस चक्कर में हमारा देश भी डिवाइड हुआ है। और काफी बेचारे जो हमारे सनातन धर्म के फॉलोअर्स थे जो उस इलाके में गए जो जहां से उनको भगाया, जो रहते थे जिनको वहां से भगाया गया, जस्ट बिकॉज की वो लोग वो धर्म फॉलो नहीं करते थे जिस धर्म के चक्कर में वो देश हमारा जो डिवाइड हुआ था। तो दिस colonized and fabricated narrative is repeated। अच्छा, इसमें दादा इसमें एडी जो है कैपिटल लिख रखा है, ad nauseum means हाँ repeated मीडिया हम लोग लिखते हैं ad nauseum, लेकिन एडी कैपिटल लिखते हैं हम लोग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा, academia and research papers and has for the longest time been the only acceptable version of the history of Bharat. Even Hindu opinion makers parroted it, and we have all internalized this lie as a civilizational truth of the Hindu-Muslim conflict in this subcontinent. In its journey of thousands of years, Hinduism gave birth to numerous ideologies. These were tested on the parameter of time and intelligence and were either adopted or discarded accordingly. To settle a difference of opinion, Hindus used to indulge in debates,
called Sastartha. Whosoever presented his point logically, and with evidence was victorious, and society followed the ideal. Islam came in as a brute force, which was not interested in any debate. It demanded total surrender. Wow. A land which has been blessed by Buddha, Mahavira, Adi Shankara, Madhava, Vasishtha, Kautilya, Nagarjuna, Gorakh, and hundreds of such ancient traditions refused to surrender. Thus, a nation reverberating with message of selfless karma by Sri Krishna rose to struggle against Islam. The Christian civilization too suffered at the hand of Islamic expansionism. With the long crusade, the Battle of Tower, Spanish occupation, and subsequent freedom, but the Hindu resistance to Islamic invader can be said to be exemplary because of the geographical proximity of Arabic and Central Asian region to the Hindu valleys and the Indo-Gangetic plains and the nature of the Hindu people of this region. क्षमा चाहता हूं दादा, मैं हाथ खड़ा किया था। मैं आप जरा पिछले पेज पे जाएंगे, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जहां पर ओके दादा ये रुकिए, सबसे लास्ट पैराग्राफ मैं एक लाइन पढ़ता हूं। मैं आई वांट टू हाईलाइट समथिंग। ये ऑथर हो सकता है बहुत अच्छे, मैं किसने लिखा है ये? रत्नु साहब का है, उमेंद्र रत्नु, डॉक्टर उमेंद्र रत्नु। ही इज रत्न। देखिए दादा, क्या इनको बुद्धा से स्टार्ट करना है? A land which has been blessed by Buddha, मतलब why Buddha you have to start with Buddha? मेरा ये ऑब्जेक्शन है। आपको अपना वो केरला से जो हमारे वो जो क्या नाम है जिन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया, शंकराचार्य, आदि शंकरा, आप वहां से नहीं शुरू कर सकते? बुद्धा जिसकी वजह से आज हमारा बेड़ा गर्क हो रखा है, बुद्धिज्म। रत्नु साहब भी, मैं यही मैं कहना चाहता हूं, अगर कॉन्शियसली अगर आप हो, आपको करना है, या तो बिल्कुल हटा दो या उसको करो एंड में, एंड बुद्धा आल्सो, बस। एंड व्हाट अबाउट सेकंड वन? भाई कुछ भी लिखो ना आप, शंकराचार्य लिखो। नहीं, बुद्धा के बारे में तो ठीक है, लेकिन महावीर के बारे में फिर? अच्छा, फिर हम महावीर जी भी, ये भी माधव, सो कौटिल्य, हाँ आप कौटिल्य से शुरू करिए। यही से मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं तो ओपन स्ट्रीम में बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सनातन धर्म वाज बुद्ध। हाँ, ओपन स्ट्रीम में बोल रहा हूँ। बट ये बुक में लिखा हुआ है, वी कैन नॉट ओमिट इट, बट ठीक है, उन्होंने जो लिखा है वो उनका ओपिनियन है, ऑथर का ओपिनियन है। इसके बारे में हम लोग थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट, अदरवाइज हम लोगों से हो जाता है दादा। हमको चलो, मैं तो अपने आप को कोई इंटेलेक्चुअल नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं मेरे में चेतना है, मैं देख रहा हूं चीजों को कि ऑथर तो अगर ये लिख रहा है, जो 2000 साल से ये जो बुद्धिज्म के फैलाव से जो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ है, कम से कम मैं इसको कॉल आउट तो कर सकता हूँ ना, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है। क्यों मजूमदार दादा? जी बिल्कुल कॉन्शियसनेस आप करना। नहीं, बुद्धा के पहले भी तो और ऋषि मुनि थे, उनका नाम ले सकते थे ना, क्यों नहीं लिखते? और दादा, अगर महात्मा बुद्ध नहीं आए होते तो शायद जो है हिंदुइज्म डिक्लाइन भी नहीं हुआ होता। करेक्ट, क्योंकि शस्त्र ही छोड़ दिए पूरी तरह। अच्छा, मैंने जो सवाल उठाया था महावीर के बारे में, हम लोगों ने जो बुक पढ़ी है उसमें जैनियों ने मुसलमानों के साथ में लड़ाई की है और हिंदुओं का हेल्प किया था, लेकिन कहीं पर भी नहीं आ रहा है पूरे उसमें जो हम लोगों ने अभी रत्नों की पढ़ी है कि किसी बौद्ध ने हेल्प की है इस्लाम के खिलाफ लड़ने में। ऑन द कंट्रेरी जो हिस्ट्री हमारे को दिखाई जाती है उसके हिसाब से ये है कि सारे के सारे बौद्ध जो अफगानिस्तान में थे और जहां पर भी थे, दे वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू इस्लाम। कहीं पर भी हो, चाहे खिलजी ने वहां पर बाबा क्या बख्तियारपुर में किया और नालंदा में जो किया है, ये लोग तो कन्वर्ट ही हो गए थे, इतना ज्यादा इनका हाल बुरा हाल। दादा आपने बड़ी अच्छी बात की कि महावीर और जैन, ठीक है, हमने जो इतिहास में पढ़ा ठीक है, वो पन्नों में है, लेकिन उसका जीता जाता सबूत अभी जो 7-8 महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में कहीं, जा एक मुस्लिम ने बोला कि वो मदनी ने बोला
एक जैन मुनि था, वो 6 फुट लंबा, जो खड़ा होके बोला कि ये सब बकवास है। और वो याद है दादा, वो क्या था, वो सद्भावना वो चल रही थी दिल्ली में। वो जैन मुनि था जिसमें इतनी हिम्मत थी, वो भगवाधारी, वो छोटे से कद का, ठीक है, वो सदार बैठा हुआ, फिर उठे वो। आज की डेट में मैं आपको बता देता हूं, जो ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं वो कौन है? जैन है। हाँ, दोनों के दोनों जैन है, विष्णु जैन और वो हरिकृष्ण जैन है वो। हरिकृष्ण जैन। So they have not identified themselves as different from Sanatan Dharma. और आज की डेट में जो भी हिंदुस्तान में जो प्रॉस्पेरिटी है, ये है वो है, चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं पर भी हो, ये उनकी वजह से है। दे डोंट डिस्क्रिमिनेट कि हाँ भाई ठीक है ये लोग हमारे से अलग हैं। जबकि बुद्धिस्ट तो आज की डेट में ये जो नीले वाले आ गए हैं। अरे प्रेम जी नमस्कार। अच्छा दादा आगे चलें, पढ़ते हैं। हाँ दादा जिबेर। Spanish occupation and subsequent freedom, but the Hindu resistance to Islamic invader can be said to be exemplary because of the geographical proximity of Arabic and Central Asian region to the Indus valleys and in the Indo-Gangetic plain, and the nature of the Hindu people of this region. Hindu society has been beautifully diverse from the beginning. A section of Hindu was busy in spiritual pursuit through Vedanta. Jainism, दादा देखो फिर शुरू किया यहाँ पर। अरे बाप रे, Hindu society has been beautifully divorced from the beginning. A section of Hindu was busy in spiritual pursuit through. No, he is not differentiating Buddhism from Hinduism, sir. Problem here. Jainism, Buddhism, Tantra, etc. With some engaged in trade and commerce, some indulged in art and architecture. A lot of were invested in day-to-day labor of life, and it was left only to Kshatriya, mainly the Rajput, to lead the fight against the invader. Hence, with a fraction of population engaging in combat, and that too with a very ethical code of conduct during the war, the Hindu resistance to Islam makes an aspiring study of the lust of human spirit to cling to the religion of the forefather. And अरे बाप रे क्या लिख गया दादा? वो बोलता है सोसाइटी ने सिर्फ राजपूतों के ऊपर और क्षत्रियों के ऊपर छोड़ दिया था, बाकी सबके सब अपना रिलीजन में बिजी थे। In those centuries of conflict, communication was so tenuous that it would take weeks for a letter asking for help to reach from one king to another. सर ये नैरेटिव भी सही नहीं है, क्योंकि जय भारती साहब भी ही विल अग्री, जो इनका मानवशी सिन्हा का जितना किताब है उसमें आपको राजपूत के अलावा और लोग भी तो मिलते हैं जो लड़े हैं। नहीं, बाकी जगह वो लिख रहा है, बाकी जगह लिख रहा है कि पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन ने हेल्प किया, सबने हेल्प किया, ये किया वो किया। हेल्प क्या किया? अकेले भी लड़े लोग, हेल्प क्या किया? हेल्प ये तो हेल्प बोलना गलत होगा एकदम। इंडिपेंडेंटली लड़े हैं। वो किताब आप पढ़िए तब समझ में आएगा। जय भारती साहब मुझे रेकमेंड किए थे तो मैं लिया था वो। तो एक थॉट है जो कम से कम 1.5-2 साल से मैंने दबा के रखा हुआ है, मैं आज शेयर कर देता हूँ। और आप ग्लैड कि अगर प्रेम जी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ प्रेम जी इसको जरूर सुने, कि जब से एक्स मुस्लिम चैनल से जब हुआ और आदमी सोचने लगता है ना डायरेक्शन में, आप बताना दादा, ये मेरा जो एनालिसिस है, हिंदुइज्म कोई एक फॉर्मल रिलीजन तो है नहीं जैसे ब्राह्मिक फेथ है, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। हिंदुइज्म में से जिसने हिंदुइज्म से अलग होकर एक रिलीजन को फॉर्मलाइज कर दिया, एक नई ब्रांच बना दी, उनका बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। कैसे? बुद्धिज्म निकला, ही वाज अ हिंदू, चाहे वो नेपाल से था, वो भी हिंदू कंट्री थी, शिव जी का वहां मंदिर है, ठीक है। बुद्धा देखो आज क्या हाल है। मैं तो इतना आगे कहता हूं, हो सकता है प्रेम जी को यह बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है। गुरु नानक देव जी भी एक क्षत्रिय परिवार से थे, ठीक है। उसके बाद होते होते 10 कोरों से एक फॉर्मल रिलीजन बन गया। आज आप देखो सिखिज्म का क्या हाल हो गया है। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे बताइए। हिंदुइज्म से क्यों नहीं रहे?
दादा बिजी हिंदुइज्म होंगे, से खाना वाना खा रहे होंगे, आ जाएंगे वो बाद में। हिंदुइज्म से नहीं, विपी दादा और एम दादा आप अपना वक्तव्य रखिए। नहीं, हिंदुइज्म से सही बात। एक नॉन फॉर्मलाइज रिलीजन से आप निकल कर एक फॉर्मल चीज अलग बना देते हो, उसका आज हाल देख लो आप। दादा ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल, ये मेरा एनालिसिस है, अब आप बताइए। नहीं सही है, सही है। और मैं जो कहा है ये देखिए, राजपूत हैव डेफिनेटली कंट्रीब्यूटेड, बट वो मानसी सिन्हा किताब पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगा कि साउथ में लोग लड़े, आसाम में लड़े, बहुत जगह मतलब। हाँ? तो इन लोग इंडिपेंडेंटली लड़े, इनको तो राजपूत हेल्प नहीं किए थे। जहां जहां लड़े सफल हुए इन लोग, they could keep Islam at bay with no malice towards anybody. I have not कौन ये कौन आ गए क्या प्रेम जी? अच्छा ये तो ये है, अच्छा नितिन खेल, ओके। अरे क्या हुआ यार भाई, आ जाओ अंदर। ये किताब पढ़िए सैफरन सोर्ड, इसमें वही मैं बोल रहा हूँ दादा। इतना इसमें 54 stories, 54 stories are there, I think 54 stories are there। 52 है सेकंड में 52। अच्छा हाँ। कौन कौन नहीं लड़ा भारत के हर नॉर्थ ईस्ट का बड़ा, वो जो एक ओम डायनेस्टी थी 400 साल तक फटक नहीं दिया किसी को है। जयवर्ती साहब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, इसका जवाब अगर हो सके तो दीजिएगा, किताब तो हम बाद में पढ़ते रहेंगे। सवाल ये है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड गुरु नानक टू स्टार्ट अनदर रिलीजन? Guru Nanak didn't start another religion in a formalized way. That was later on. It later on took shape as a what should I say, with the pagdi and other things and all. Had he left it without all those things, ठीक है, उस समय मान लीजिए that was the need of the hour. But after the need was over, they should have got. What was that need? What was the need? Even giving an idea. अभी जनरल सिंह भट्टार वाले ने एक आइडिया दिया खालिस्तान का, तो अभी तो हम लोग उसको झेल रहे हैं, 30 साल 40 साल मरे हुए हो गए, फिर भी उसको झेल रहे हैं। तो what was the need of giving that idea also by Guru Nanak? वो बताइए क्या? सर गुरु नानक देव जी ने नींव तो रख दी ना, एक फाउंडेशन रख दी थी जिसको गुरु गोबिंद सिंह जी ने फॉर्मलाइज कर दिया। बीज तो अंदर डाल ही दिया था जमीन के अंदर, उसके बाद में भले पेड़ बना, बाद में कहते हैं बना, लेकिन वो जो बीज डाला था उसका कारण क्या था ये तो बताइए। मैंने बहुत कोशिश की इसको मालूम करने के, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा मेरे को। अब वो प्रेम जी ना बता सकते, कौन सी वाली चीज कह रहे हो आप? गुरु नानक ने वो जो सिख धर्म की जो बीज डाला था उसका कारण क्या था? वो अकबर के टाइम में था। अकबर तो इतना ज्यादा बकबक करता नहीं था ना तो किसी के खिलाफ कुछ प्रॉब्लम भी करता था, तो क्यों उन्होंने वो शुरू किया था? दादा वो तो वॉर तो तब भी चल रही थी। अकबर कोई महात्मा थोड़ी था। नहीं ठीक है, अकबर ने मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी किया है अफगानिस्तान में किया है, अपने जो उसका राजपाट था उसको कंसिडर करने के चक्कर में था, वेस्ट बंगाल में झगड़ा कर रहा था, बलूचिस्तान में झगड़ा हो रहा था उसका, इधर की तरफ को ये जो चित्तौड़ वाले उसके पीछे से डंडा करके बैठे हुए थे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसी टाइम में जिस समय भक्ति मूवमेंट चल रहा था, तुलसीदास जी रामायण लिख, रामचरितमानस लिख रहे थे, सूरदास जी अपनी कहानी मथुरा में ब्रजभाषा में लिखे जा रहे थे, उस समय गुरु नानक को क्या पड़ी थी कि वो एक अलग से शुरू करें? मैं वो पूछना चाहता हूँ। दादा क्षत्रियों का जो है नंबर्स बढ़ाने के लिए, बस, और कोई इसका बनने का कोई कारण नहीं था। और ये तो एक पर्पस, ये वाला जो है ना, नंबर बढ़ाने के लिए गुरु नानक ने अलग से वो सिख पंथ की स्थापना। ऐसा सिख पंथ ऐसे ही तो बना था एक्चुअली। जो है जब ये युद्ध चल रहे थे तो क्षत्रिय कम पड़ रहे थे, नंबर्स कम हो रहे थे उनके, तो इस वजह से अलग अलग जगह से लड़ने वाले आके जो है वो सिख धर्म में जाने लगे थे, उसकी स्थापना करी गई। और ये इनको ट्रेन करने वाले सारे ये क्षत्रिय ही थे। ये मतलब क्या नाम है आपके, ये राजस्थान के महाराणा वगैरह जो हैं। नहीं, हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है। मेरे को समझ में आया था, मैं अब उसको बता देता हूँ। जो मैंने जवाब ढूंढा था उसका, that जवाब was that when foreign invasion was taking place from Afghanistan on Bharat,
उस समय पूरा जो हमारा पंजाब था और सिंध था वो जाति में डिवाइड था। मैं जय भारती साहब की तरफ लेके जा रहा हूँ उसको, जो किताब दिखा रहे थे, जाति में डिवाइड था। तो देयर वाज अ नीड कि भाई ठीक है कोई ऐसा पंथ बने जिसमें कि जाति हो ही नहीं, और सारे के सारे जो भी होंगे दे विल बी कंसीडर्ड एज कि भाई ठीक है तुम इस कम्युनिटी के। सिंधियों में कोई जाति होती है? नहीं होती। इसीलिए क्योंकि उनको ये मालूम था कि वी आर द फर्स्ट टू गेट द टेस्ट ऑफ इन्वेजन। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि गुरु नानक साहब ने भी सोचा होगा कि जहां पर जाति होती है, जाति प्रथा होती है, वहां पर क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोलते हैं भाई ठीक है तुम ये हो तो तुम ही लड़ाई करोगे, तो द एंटायर कम्युनिटी, एंटायर सोसाइटी हैज टू फाइट। ये एक डिसीजन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें एक फ्लॉ मेरे को नजर आता है जो मेरे ख्याल से गुरु नानक जी या समझ नहीं सके, मैं कहना नहीं चाहिए समझ नहीं सके, ये मैं वापस लेता हूं जो मैंने कहा। दादा मेरा सोचने जो आपने बोला है, आप एक पंथ बना दीजिए जिसमें कोई जाति ना हो, ठीक है, लेकिन अगर कल्चरली आपके डीएनए खून में जातियां वो हैं, आप बना तो लोगे, लेकिन कल्चरली तो आप अपना वही कल्चर तो आपने नहीं छोड़ा ना, या तो अपना कल्चर ही चेंज कर दो। दादा वो जाति बोल रहे हैं, वो वर्ण था उस टाइम पे, तो नहीं उसमें मेरी भारती साहब उस पे नहीं आ रहे हैं, उस पे नहीं आ रहा। चाहे जाति कह लो वर्ण कह लो, आप कल्चरली एक चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने कल्चर तो नहीं छोड़ा ना, आपने अपना ऑर्गेनाइज रिलीजन या जो था छोड़ दिया। कल्चरली आप एक चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने में से कल्चर को कैसे निकाल सकते हो? या तो आप अपना कल्चर ही बिल्कुल निकला नहीं ना, बस कल्चर निकला नहीं। समझ गए मेरी बात? जब कल्चर नहीं निकला, आप कितने रिलीजन के एक्सपेरिमेंट कर लो, आपकी वो खत्म नहीं होगी। बस मेरा ये कहना है। दादा वो तो क्षत्रिय का ही एक्सटेंशन है ना, वर्ण तो वही है, वो उसमें बाकी वर्ण नहीं है, बस ये है, इसलिए वो एक एक है। नहीं एक है तो फिर अभी मजहबी सिख, फलाना सिख, धमाका सिख, दादा वो तो बाद की कहानी है ना, बाद की कहानी। आज से 40-50 साल बाद कुछ और हो गया तो क्या कर सकते हैं? बुद्धिस्ट लोग में दलित बुद्धिस्ट, फलाना बुद्धिस्ट, ढिमकाना बुद्धिस्ट, ब्राह्मण से बुद्धिस्ट बना, ये सब क्यों है? फिर मेरा कल्चर कहता है कि मैं सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छू, जो मेरे पिताजी ने अपने मेरे दादाजी के मरते दम तक किए, मैंने तो नहीं किया, वो उनका एक कल्चर था। अगर मेरे पिताजी, अगर अमेरिकन या वेस्टर्न सोसाइटी कहती कि यार ये बड़ा रिग्रेसिव है, यू डोंट हैव टू डू दिस, अगर मेरे फादर को वो क्रिश्चियन बना भी देते, मुझे 100% गारंटी कर सकता हूं एज अ क्रिश्चियन आल्सो, मेरे फादर अपने पिताजी के यानी मेरे दादाजी के सुबह उठते ही सबसे पहला काम वो करते थे, उनके जाके पैर छूते थे। कल्चर तो नहीं बदला ना दादा, रिलीजन बदल गया। अब आप बोलो। दादा कल्चर वहां भी चेंज नहीं हुआ था, उनका सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस था कि क्षत्रियों की संख्या बढ़ानी है, तो किसी भी वर्ण से आ जाए, यहाँ एक ही वर्ण रहेगा और एक ही प्रैक्टिस रहेगी, वो प्रैक्टिस थी सिर्फ लड़ना। तो इसीलिए मैं बोला ना कि जब काम खत्म हो गया तब इसको डिसबैंड कर देना चाहिए था। हाँ, शुड हैव कंटिन्यूड। बिल्कुल हाँ, ये कह सकते हो कि आप जो है जब पर्पस सर्व हो गया था, हालांकि तो पर्पस दादा चल ही रहा था ना, उसके बाद तो अंग्रेज आ गए, वो अंग्रेज चले गए तो भूरे अंग्रेज आ गए, तो वो डिसमेंटलिंग का टाइम कहाँ मिला है? जितना हम लोग खींचते जाएंगे, उसको लेते जाएंगे, ढोते जाएंगे, तो उसमें बुराइयां आएंगी। मैं तो अभी देखो अंग्रेज मजुमदार दादा, आप पीके मैं तेरे को काट रहा हूँ, अब मैं कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ, ठीक है? मजुमदार दादा, आपने कहा कि उसको डिसबैंडन करना चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। चलिए दादा, मैं एक केस आपके सामने रखता हूँ। अगर हम अपने इतिहास में पीछे जाएं 3000, 4000, 5000 साल पहले, इवन रामायण काल से भी, सतयुग से भी पहले जाए, तो अगर सबसे पहले सिर्फ शिव जी को पूछते थे जी, ठीक है, राम जी को पूजना शुरू किया, उसकी कोई वजह होगी। हमने 9 देवियों को पूजना शुरू किया, उसकी कोई वजह होगी। अगर वो वजह खत्म हो गई है तो उसको डिसबैंडन कर देना चाहिए। यही चीज है, अभी तक वो वजह नहीं खत्म हुई है दादा।
उसमें तो हमारा एक राम जी और ये इसमें कल्चर आ जाती है ना। फिर लकीर के फकीर भी होते हैं ना, हमारे बाप ने नहीं, जैसा पिताजी ने जो बोला है वही हम बोलते हैं। नहीं, वो चीज नहीं सर। एक्चुअली जय भारती साहब जो बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ कि पिताजी के पैर क्यों छूते हैं, माता जी के पैर क्यों छूते हैं। तो वो चीज उसमें मतलब जो पुरुष जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो भी कहिए आप, उनको लगा कि भाई समाज में ये व्यक्ति जो है राजा हैं लेकिन ये पूजनीय है, तो इनको पूजा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो अच्छा आप भगवान का अवतार मानिए जो मानिए, अवतार तो डिबेटेबल इशू है। भगवान मतलब मनुष्य रूप लेकर उतर आए ये हम बोलते हैं। देखिए आज मुझे भूख है, मान लीजिए आप खिलाते हो मुझे, तो मैं बोलूंगा भगवान के अवतार जो है आकर प्रकट हुए वो मुझे खिलाए। उस तरह लीजिए, इसको लिटरल सेंस में मत लीजिए। जो आपका उपकार कर रहा है, जब आप प्रॉब्लम में हो, जब आपको कोई मतलब मदद कर रहा है, तो उसको भगवान समान हम लोग मानते हैं कि भगवान को तो देख नहीं पाते हैं ना। तो उस जमाने में यही लोग सोचकर उनको ले लिए भगवान के तरह। आप वैसे तो कुछ भी पूजिए, आप अलमारी को पूजिए, कोई भी चीज पूजिए, आप मानिए तो उसमें भी भगवान है। हर एक एटम में भगवान है, नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा ये अलमारी को पूजना मतलब उसको साफ सुथरा रखना, कपड़ा ये किताब का अलमारी है तो उसको मतलब किताब बढ़िया से रखना, मेंटेन करना, और कुछ नहीं। पूजना मतलब नॉट इन द रिचुअलिस्टिक, इवन इन द रिचुअल ऑफ क्लीनिंग द अलमीरा इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें आप कोई पेस्टिसाइड मान लो डाल रहे हो कि टर्माइट्स ना अटैक करें। कि मेरा मतलब एनालॉजी यही है कि पूजा शुड बी टेकन इन दैट वे, नॉट इन द वे ब्लाइंड फेथ। आगे चलते दादा। दिस टॉपिक इज नेवर एंडिंग। उसमें क्या है जो पीछे हुआ है आज की डेट में यही होता है। अगर मान लो मैं रास्ता भटक जाता हूँ तो कोई भी मेरा बाप या कोई भी आके बोलेगा ए बकवास मत कर, सीधा चल। ऊपर वाले ने ये बोला था, रामचंद्र जी ने ये बोला था और कृष्ण भगवान ने ये बोला था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी तरीके से काम करो। इफ यू लास्ट इज दादा बिफोर यू कंटिन्यू, देखिए हम किताबें पढ़ रहे हैं, हम इस किताबों का सम्मान कर रहे हैं, उस ऑथर उस लेखक को दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं हम भी वी शुड ऑल्सो क्रिटिक। अगर हमको इसमें कुछ लगता है वी शुड ऑल्सो डिस्कस, अपनी राय देनी चाहिए कि भाई मैं ऐसे सोचता हूँ। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हम इसको पढ़े कि हाँ भी ठीक है हिस्ट्री में लिखा है। यस दैट्स ऑल दादा। ठीक है दादा, लेट्स स्टार्ट। ये बात तो स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि सबको टेस्ट करो, हर चीज को टेस्ट करो। बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम ये है had we not touched this book we would have not come to know that रतनु ने यहाँ पर गलत किया हुआ है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर हम नहीं जाएंगे वहां पर, अंदर नहीं घुसेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ पर क्या गलती है, क्या पर क्या अच्छा है। ये भी तो चीजें हैं। लाख चीजें अच्छी होंगी लेकिन दो चार गलतियां हैं तो उसको तो बोलना चाहिए ना कि हाँ भाई ठीक है तुम गलत लिख रहे हो। जी सर, हम चलते हैं आगे। In those centuries of conflict, communication was so tenuous that it would take weeks for a letter asking for help to reach from one king to another. To organize and mobilize our armies against murdering thugs was a huge challenge. This was when the true nature and intent of Islamic invader had not even dawned upon the king and people of the northern and northwestern Bharat. While the plundering army of mercenaries from the west were ceaselessly invading Bharat with a singular aim of converting us to their faith. While a large segment of the population of Hindus was engaged in trade and commerce and intellectual and spiritual pursuit, while India was the richest economy in the world for past 1,000 years, while ills like sex slavery, human slavery, dhimma, and its enforcement by Islamic rulers, the slaughter of non-combatant population at the hand of the merciless army, absolutely immoral and lacking rules of engagement of armies, unpredictable barbaric behavior against civilizational value, purchasing loyalties of dissatisfied Hindus, and ruthless will to annihilate anything un-Islamic by any means possible left the Hindus of this region bewildered and confused as to how to deal with this tyranny.
While the Hindu society was busy discovering the laws of physics and mathematics and creating poetry and caliber of Jaydev, Geet Gobind and Tulsi Ramcharitmanas, while Hindus were erecting architectural marvel like Vijaya Stamba, Victory Tower, Ranakpur Temple, Konark Sun Temple, etc. We were attacked by a people from a barren desert who had no concept of beauty and civility, whose singular obsession was to spread the word of a person whom they thought to be a divine messenger, a people who had nothing to do in their barbaric pursuit, since there was nothing of value or splendor in their native land, a people who were obsessed with money and women of those whom they could not subjugate, a people who justified rape, murder, and plunder of everything that did not conform to their theology, a people who were merciless killers and looters of wealth since they did not know the art of wealth creation, a people who baffled our ancestors with their desire to die and kill for their religion without any consideration for morality and civility. Such was the uneven conflict that our glorious and extremely intelligent ancestors endured, survived, and eventually overcame in 14th centuries. When the world analyzes the amazing feat of Hindu dispassionately, it will clearly realize the value of this extreme sacrifice that Hindus have made not only for themselves but for the entire globe. The global community should be grateful and remember the Hindu kings and their fighters who stood as a bulwark between Islamic expansionism and salvaged the Far East and China in its process. Wow. Author Ian Einstein writes in his book that the world must be grateful to Hindus of the subcontinent for saving it from Islamization of the globe. And then we have the self-proclaimed intelligentsia of modern India inventing and peddling a lie that Islam ruled over Hindus for 1,000 years. And this rule was a benevolent visitation by some very advanced people who had come to civilize the primitive native of this glorious land. The ill-conceived notion of Ganga Jamuna Tehzeeb was an invention to humanize rape and massacre that cannot possibly be humanized, leave alone justified. The central thrust of this book is to bust the lie perpetrated and established in the day-to-day discourse of this besieged nation that Islamists ruled us for 1,000 years. Let us examine this theory of the 1,000-year slavery of Hindus critically and try to uncover the truth objectively. Following are the reasons that Islamic invasion of this land are not one-sided conquest and that ended up enslaving Hindus of India. Chronology and duration of Islamic rule. If we look at hard historical data recorded by both the Hindus as well as the Persians and Turks historians since 7th century Christian era, when the first Islamic attack happened at Raja Dahir of Sindh by Muhammad bin Qasim, we realize that passage of years of Islamic rule in Delhi is one big lie. Qasim returned to Arabia after killing Dahir, and the second wave of Arabs then attacked Rajasthan. The Arabs were opposed by the combined forces of Bappa Rawal Nagbhatta and Gurjara Pratihara's dynasty and Pulikas Raja of Gujarat. The Arabs were comprehensively defeated by the Hindus' forces and chased back to Iran by Bappa. The Arab annals of that time quote the fury of Hindu warriors thus: not a place of refuge was to be found from the wrath of Rajput. From the 7th century onward, repeated Islamic invasions were repelled by Mewar dynasty in alliance with other Hindu kingdoms. Kuman 1, 2, 3, Shakti Kumar, Rawal Jaitra Singh and Samar Singh of Mewar stand out as names that did not let the Arab get past Sindh. Mahmud of Ghaznavi, an Afghan of Turk origin, attacked Bharat in the beginning of the 11th century and was resisted by Jaipala, Anandpala and Tilochanpala of the Sahiya dynasty. Mahmud managed to plunder the Somnath temple and destroy the sacred lingam, but he witnessed the fury of 50,000 Hindu warriors who died defending Somnath. Mahmud beat a hasty retreat and fearing attack by Chalukya, Bhimdeva returned via Multan and Mansura Gardiji. A Muslim historian writes,
The Badshah of the Hindu stood in his way, disputing his path. Muhammad decided therefore to leave the right track back to Ghazni from fear lest this great victory of his turn into defeat. The Jats of Sindh still molested the retreating army of Ghazni, causing heavy losses of men and riches. The first major defeat of Hindus at the hand of Muslim invader happened around Christian era 1192. पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहा था वो. When साहब हाँ वही है साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी defeated पृथ्वीराज चौहान और वो भी ट्रिचरी से. In the second battle of Taraim, where Prithviraj was killed, Muhammad Ghori appointed Qutubuddin Aibak as his ambassador, and thus began the war against Islam by various Hindu kings that would last for the next 50 years until the advent of East India Company. Thus, even on the scale of fear, the Islamic penetration on our nation lasted a total of 600 years. Of these 600 years, the first 300 were attributed to euphemism called Delhi Sultanate, as if it was a great powerful sultan ruling Delhi, whereas in reality, these were mercenaries and robbers whose rule extended from Yamuna to today's Mehrauli at the most. All of these so-called sultans were running around northwest Bharat, plundering our cities, destroying our temples, and killing innocent Hindu randomly. Dr. R.C. Majumdar writes about Firoz Tughlaq, one of such robbers around Delhi. Firoz proved to be the most bigoted Islamist who preceded Ibrahim Lodi on Aurangzeb. Firoz was the first such Islamic mercenary who started taking jizya from Brahmins of Bharat. But all through this pillaging, they were being resisted by Hindu kings. Now let us examine the duration of the much acclaimed Mughal Empire. Firstly, the Mughal rule is said to begin with the victory of Babur at the famous Battle of Panwa in Christian era 1527, where lakhs of Hindu soldiers from both sides were killed. As detailed in the chapter on Sangha, we can reasonably infer that Kanwa was not a defeat of Maharana Sangha, but a victory or at best a stalemate. Sangha managed to inflict enough damage on the Mughal that they dared not follow him. Sangha stayed in that area for another year and continued fighting Babur before being poisoned by him. In Christian era 1528, Babur himself died 3 years after Kanwa. Secondly, Babur's son Humayun had to keep fighting his brothers Bahadur Shah Gujarat and Sher Shah to retain even Delhi under him till his death in 1556. The longest interim from Christian era 1540 to 1545, Humayun was defeated and chased away by Iran by Sher Shah Suri, an able but ruthless Afghan. The real Mughal rule began only with Akbar in 1556 and continued through Jahangir and Shahjahan and culminated with Aurangzeb's death in 1707. 46, 44, 144, 144. कितना हुआ? 151 years only. So even if we grant the capture of Delhi as empire to the Mughal, it lasted only about 150 years. Plus, Hindu must wonder as to where this figure of 1,000 years came from. By what logic constant attack by Islamic invader constitute victory for them? Why do we lap the white lie of 1,000 years of slavery, which is beyond comprehension even on a mere time scale? Any comment on this, panelist? फिर आगे बढ़ते हैं. 150 साल राज किया था बस. 1556 से लेकर के 1707 औरंगजेब मर गया, बस इतना ही हुआ है. आगे चलते हैं. Civil war among Islamic rulers and Hindu resistance. If you look at the successive reign of Islamic invaders trying to retain their foothold in Delhi, it appears like an insistent war with occasional plundering of Hindu temples and religious institutions. For example, in the first 300 years after Muhammad Ghori killed Prithviraj Chauhan in Christian era 1192, 5 dynasties, 24 so-called emperors and 1 empress lasted in Delhi through assassinations, rebellions, and dethronement. The bloodbath that happened in the post-Muhammad Khalifa in Arabia was replicated in India by Muslim invaders. Besides this, infighting, the Hindu king of India kept infighting Islamic invaders without a break. One wondered what kind of sultanate was
established by these plunderers when the average ruler of Delhi king comes out to be 10 to 12 years. This is a saying, and there is a saying in Punjabi that marked the time of robber from the Sayyid dynasty named Shah Alam, meaning what is the extent of the Sultanate of Shah Alam? It is from Delhi to Palam. जयवाटी साहब, ये सल्तनत है। ये तो पता था सबको, ये हम लोगों को पता था। पालम being a village few kilometers from Delhi. आज की डेट में तो दिल्ली है पूरा पूरा, अब तो पालम भी नहीं रहेगा। पहले उस जमाने में रहा होगा कि हाँ बेटी के उसके बीच में जितने भी गांव है उसके ऊपर तो रूल करते हैं। Where the universities palaces are pieces of architecture. What art was patronized by these power crazy plunderers? What was the geographical extent of this so-called Delhi Sultanate? When all 5 so-called dynasties were running around the vast nation of ours to fight one kingdom or another, was Delhi even a center of power at the time of this so-called Delhi Sultanate? It was only in Christian era 1639 that Shah Jahan decided to shift capital from Agra to Delhi, that Delhi became a power center. These sultans of Delhi Sultanate were conclusively defeated by Mewar Maharanas and the Vijayanagar Empire. 3 of these sultans were imprisoned in Chittor in the most humiliating manner. Rana Hamir Singh kept Muhammad bin Tughlaq captive in Chittor for 6 months and set him free only after levying heavy penalties on him. Rana Lakha captured Firoz bin Tughlaq at Chittor, and also Maharana Mughal captured a ruler of Delhi. Rana Kumbha fought 56 battles in his life against the Islamic ruler of Malwa, Gujarat and Nagaur, and did not lose a single one. Kumbha also captured the Sultan of Malwa, Mahmud Khilji, and held him captive for months in Chittor. Sangha fought more than 100 battles, winning every single one. Sangha took up the Malwa Sultan as his prisoners and defeated Delhi's king Ibrahim Lodi twice at Bakrol and Katauli. Sangha also captured a son of Lodi and released him after taking adequate compensation for the war. Sangha's arm reached up to Afghanistan in the west and beyond Malwa in the east. Pratap defeated Akbar's imperial army conclusively at Jawer in 1583, slaughtering thousands of Mughals in 3 days. Jahangir's army was defeated 17 times by Pratap's son Amar Singh before concluding an honorable treaty with Mughals whereby Mewar retained its freedom and even Chittor was freed from the clutches of Mughal. When was the last time slaves signed honorable treaty with their captors? Shah Jahan had to run around the country quelling rebellion. Aurangzeb was conclusively defeated by Rana Raj Singh of Mewar in Christian era 1680 and later by Ahom of Assam. He met his nemesis in the hands of Marathas in the Deccan and died a defeated and broken man. So, who was enslaving whom in medieval India? Contrast this with the spread of Islam in Arabia and the Middle East. Persia lost its original civilization and religion with its entire Zoroastrian population killed and converted. Mesopotamia became 100% Islamic and Egypt's ancient civilization was destroyed. All in a matter of decades, Hindu civilization stands today when after 1,400 years of incessant attack. No uprooting of Indian people from Bharat. Another essentially important phenomenon is that people flee the city or country of their inhabitation when they are attacked by barbaric invaders, as happened with the Zoroastrians who had to flee Persia. A few hundred of these landed in India of the coast of Gujarat, or take the case of Jews escaping Europe in the East last century. Is there a single incident of Hindu fleeing Bharatvarsha to escape the Islamic invaders? None at all. The first exodus of slaughter of Hindus in modern times happened in 1971 from Bangladesh. But because Hindus had a modern, well-equipped army, this exodus was responded to adequately. East Pakistan was broken from West Pakistan and Bangladesh was born with 92,000 Pakistan soldiers taken captive by India. Migrating populations are most vulnerable to slaughter and hunger. While this murder of Hindus and Sikhs happened in the so-called modern times, we have no such record of mass-scale migration of Hindus in medieval Bharat. Hindu kings and armies have consistently resisted Islamic gangsters in this manner for 1,400 years. Even today, we see persecuted people from Syria, the Yazidis and Kurds in Iraq fleeing to safer nations. As we are writing this, Hindus, Sikhs and Christians in Pakistan and Bangladesh
are fleeing their home to escape persecution because they have no choice left. Either they would be killed or converted, so they choose to flee to the safety of more civilized society. 3. Underage Hindu, Sikh, Christian girls are picked up every single day from their homes in Pakistan while the world looks away. If this is happening in 21st century in full view of the global community, we can imagine what Hindus must have endured for centuries. An exodus occurs when the people and their leaders capitulate. If people rise and fight back, there is no exodus. A fight gives hope to people to endure the suffering and stay on. In the Kashmir Valley in 1990, Muslims were shouting from their mosques that Hindus living in there should either convert, flee, or die. Kashmir exodus of 1990 happened when Hindus in the valley lost all hopes of being protected. Unlike our forefathers, who were masculine Hindus and fought all such threat, we Hindus looked away as our brothers and sisters were kicked out of their ancestral home by a mafia, masquerading as religion. The shame of the Kashmiri exodus of Hindus is on us and our pathetic leadership, which capitulated. Even today, these unfortunate Hindus are struggling to get this heinous act of 1990 declared as a genocide, but nothing has been achieved. Our glorious ancestors were not weak-kneed. Hence, all threats of Islamists were responded to. In kind, medieval moral conduct in the 21st century should be dealt with a similar fashion, and our present leadership should learn from history. Hindu king raised the banner against Islam and kept fighting it, and the Hindus stood behind their kings to fight Islam, then to flee to other nations. To the firm entrenchment of Hindus in the subcontinent is an undeniable indicator of their resolve to make an Islamic invasion and expose the lie of the claim of 1,000 years of Hindu slavery. Art and architecture in the Hindu kingdom. If the Hindus were slaves for 1,000 years, who erected the magnificent fort of Mewar, the architectural marvel of Chittor, the observations in Rajasthan, observatories in the Rajasthan, the beautiful havelis, mansions and palaces adorning Rajasthan, the Sun Temple at Konark, the grandest temple at Mahabalipuram, Khajuraho and Ranakpur. Maranakuma Mewar alone built 32 forts in the 15th century beside the architecture wonder Vijayastam in the Fort of Chittor. He did this while he fought 56 pitched battles with Islamic armies of Malwa, Gujarat and Nagaur. How did the Hindus write brilliant commentaries on the Gita Upanishad like the one written by Madhvacharya, Vallabhacharya and Ramanujacharya? How did Mirabai compose such sublime poetry and the entire chain of the Bhakti movement propagate and serve Hinduism if he were slave? How could Hindus preach their religion if Islamists had completely subjugated them? Can slaves even dream of writing works of arts and constructing architectural marvel? We slaves erected an empire like Vijayanagara Empire, spreading and spanning through the entire southern India for 300 years. We slaves kept worshipping idols, singing Vedic hymns, running dance and drama schools under regal patronage and performing Mangal Aartis to their gods in mammoth temples when still under Islamic rule for 1,000 years. Hindustan has always stuck like a thorn in the heart of Islamists because Hindu resistance against Islamic expansionism continued unabated for centuries and they could not convert the Hindus masses of this subcontinent. The thriving Hindu culture, traditions, and festivals are ample evidence that the monotheistic Islamic invaders were forced to endure all the polytheistic rituals, much to their distress and discomfort, and were helpless to stop them, unlike what they had done to the pagan civilization of West Asia. It is this callousness of the mediocre intelligentsia of this unfortunate nation that instead of applauding the Hindus for the staunch defense of their culture, literature, and traditions, the fabricated like the Ganga Yamuna Tehzeeb is perpetrated and attributed to the tolerance of Islamic invaders. The double-mouthed historians of this nation call Hindu slaves of Islamists, and at the same time, the Islamist invaders are desperately shown to be tolerant. No one asked the history writer of this nation that, if need,
If indeed Hindus were enslaved by Muslims, how can Muslims be considered tolerant? The truth is that Hindus continued with their investigation into their spiritual, scientific, and cultural pursuit in spite of the Muslim invasion. If Hindus were morbid slaves of Muslims, Bharat too would have been cursed to be the dark ages like Europe. फिर ये बोल रहे हैं Hindus were not taken as slaves by Islamic invader. The slavery of fellow human being is a disease brought to Bharat by Islamic invaders. All through 8,000 years of Vedic civilization, with all its ups and downs, human slavery was an inconceivable idea in Sanatana Dharma. Opposing slavery was one of the reasons for Hindu kings and population resisting Islam so vehemently. Almost all annals of Rajput states are filled with conversation among kings and their advisors about the fate that would fall upon the population if Islamic plunderers were not resisted. Colonel Todd described this trait of Rajput to fanatically defend the honor of their women folk in beautiful words. If devotion to the fair sex be admitted as the criterion for civilization, the Rajput must rank high. His susceptibility in extreme and fire at the slightest offense to female delicacy, which he never forgave. The unique practice of Shaka Jawhar is an extreme example of Hindus of India choosing a painful death over slavery. Islamic invaders were known to keep Hindu women as sex slaves as a means to humiliate the local population because the barbarians found sanction for such a practice in their religious book. Hence, Rajasthan witnessed at least a dozen Shaka Jawhar in Chittor, Ranthambore, Jalore, etc., where Hindu women humiliated themselves to avoid sex slavery. Many a times questions are raised as to why die such a painful death. The women could have consumed poison or stabbed each other to death. The answer is in the horrible practice of necrophilia practiced by Islamic invaders. The Islamic invaders were known to humiliate even the corpse of Hindu women. Hence, Jawhar was done. Burning oneself in Jawhar was also sent a message to the rest of the Hindu population to keep fighting the invaders. Can we even imagine the level of intelligence and determination of entire state legal line and also its general population to devise such a tool to counter Islamic slavery? With the rising flames of the Jawhar, the message to jihadis at that time as well as to fellow Hindus was loud and clear. Violence and torture can never subdue us. Never will we forsake the religion of our ancestors. Never will we surrender our freedom at the altar of slavery. James Todd described the first Jawhar of Rani Padmini of Chittor in these words. Rana Ratan Singh called his chief around him and said, "Now I devote myself to Chittor." But another awful sacrifice was to precede the act of Rana going to fight Alauddin Khilji. In a horrifying rite, the Jawhar, where the women were immolated to preserve them from pollution or captivity, the funeral pyre was lit with the great subterranean retreat in chambers impervious to the light of the day. The defenders of Chittor beheld in possession the queens their own wives and daughters to the number of several thousand. The fair Padmini closed the throng, which was augmented by whatever of family beauty or youth could be tempted by tattered lust. They were conveyed to the cavern and the opening closed upon them, leaving them to find security from dishonor in the devouring element of fire. Nowhere in this globe, at any time in human history, does one find such resolve in the entire population to fight for their freedom, and we do in the extremely courageous act of Jawhar. Even in defeat, Hindus sent a message to their plunderer that they might have defeated and killed them, but Hindus will never be subjugated. A message for the entire world to see that the death of honor is far superior. That the death of honor is far superior to a few years of rest life as a slave. Never was a more audacious and bold statement written against the vile practice of slavery than in the unparalleled act of Shaka Jawhar, the self-immolation by women and a warrior's death
in the battlefield for men, an act of supreme defiance in the face of insurmountable odds. People who surrendered their freedom do not commit act of jawhar, that too on such a massive scale and so consistently. The mass migration of Hindus from cities to multiple small habitations across Bharat was a consequence of the determination of Hindus to refuse slavery to Islamists. According to an estimate, Kashmir was, ये बहुत important है, ये बात साहब बहुत important है. The mass migration of Hindus from cities to multiple small habitations across Bharat was a consequence of the determination of Hindus to refuse slavery of Islam. Okay. According to estimates, Kashmir alone has witnessed 7 months such mass migration in the past 1,000 years. This migration happened at huge economic cost to the prosperous nation of ours, as center of trade and commerce were abandoned by the mercantile class and artisans just to escape persecution at the hands of barbarians, singularly obsessed with conversion and sex slavery. Yes, there are recorded instances of Arab and Turk invaders like Muhammad Qasim, Taimur, Lang, and Nadir Shah taking thousands of Hindus as slaves back to their native nations. This had been a standard practice of Islamic plunder, but it was resisted fiercely by the Hindu kings. These instances happened when a Hindu opponent was temporarily defeated and these barbarians could capture some locals and take them as slaves. The Sikh warriors during the 17th and 18th century would seriously attack Muslim forts, where Hindu women were kept prisoners to be transported to Middle East for sex slavery. The message to the Islamic barbarian was loud and clear. Hindus will not yield to slavery and would pay even considerable price to avoid that, including martyrdom to defend and protect their women. Hindu-Muslim rural alliance. In every human society, there are losers. Not everyone can be winner, and for an external enemy to invade and tap the grudges of the loser and find an ally in him is one of the easiest things in the world. Islamic invaders expected these human follies to gain a foothold in India, but does it mean that enslaved Hindus are tricked them by fueling in fighting among Hindus? That is a question we need to ponder over. Not a single Muslim invader ruled even an inch of India without striking alliance with the local Hindu king. Islamic invasion of the Indian subcontinent was not a story of outright military conquest by Islam, but a saga of Hindu opposition to the invaders and resolve to save Dharma at all cost. Hence, Muslims were forced to change their practice and purchase peace with Hindus is, however, temporary and artificial that peace turned out to be. But it does not underline the truth that Hindus could never be defeated by Islamic invaders unless aided by Hindu kings in resources, strategy, or information. Would Haldi Ghati have witnessed such a bloodbath of Rajput if Jaipur had allied with Mewat? Could Akbar even dream of becoming an emperor of India without the help of mighty Man Singh and Jagannath Kashwaha? It was Man Singh who had won Kabul for Akbar, not any Muslim general. The wars of succession between the sons of Akbar, Jahangir and Shahjahan were all fought by direct or indirect support of Hindu kings too. One Mughal or the other. This meant a great control of Hindus on the destiny and conduct of the Mughals who was ruling Delhi. What can be a bigger proof of defiance of Mughal than this? It was the Hindu kings who crushed revolts by Muslims against Islamic rulers. Akbar's reign would have crumbled if Hindu warriors like Man Singh, Jagannath Kashwa, Bhagwan Das, and Madhav Singh of Jaipur had not fought Akbar's war for him against fellow Muslims. Jaswant Singh of Jodhpur was instrumental in quelling the rebellion of Pathans in Afghanistan for Aurangzeb. Before Akbar, few Hindu kings supported the Islamic invaders. Hence, we see that the whole edifice of Islam rule over India was too fragile and shaky to pose a real threat to Hindu survival in the subcontinent. It was Akbar who changed this and aligned with Hindu kings to augment his power and create a quasi-Islamic rule in the heart of the country. Akbar, next to successors Jahangir and Shahjahan, continued this policy of humoring Hindu princes and used them to quell rebellion at all over the land.
Aurangzeb abandoned this policy and attacked Hindu lives and values openly by destroying Hindu temples and imposing the Jizya tax on Hindus. Jaipur's Mirza Raja Jai Singh and Jodhpur Jaswant Singh were murdered by Aurangzeb, who pushed the Rathors of Marwar state into the arms of Singh of Mewar. The direct consequences of the Sisodia-Rathor alliance was the conclusive defeat and ouster of Aurangzeb from Rajasthan permanently in Christian era 1680. Aurangzeb spent the rest of his life fighting the Hindus in Deccan and Assam. With Aurangzeb's death in the Christian era 1707, Mughal rule crumbled like a pack of cards, reinforcing the doctrine that Muslim rule in this nation was only possible as long as they were in alliance with Hindu kingdoms. We may question the intelligence and loyalty of such Hindu kingdom who facilitated Islamists instead of their own brothers, but it does show us the truth of the Islamic invader who were mere managers of power in medieval India instead of great conquerors that they are falsely portrayed as. Reference to Islamists in contemporary literature. Okay. If you look at the last 1004 years of conflict, there was not a period when Hindu kings stopped constructing forts and palaces, and our Hindu writers stopped composing all kinds of literature. A lot of this literature, especially the short, dohas, couplet, and shorthas, verses in meter, written in Rajasthan and Mughal court, were scathing attack on the anti-Hindu policies of Muslim rulers. These writings were crucial in infusing education and opposition to the plunder of the Hindu ethos by the Islamic invader. Prithviraj Raso, Kuman Raso, and Rana Raso were written by local Hindu bards of Rajasthan, describing various wars and the glory of Hindu kings against the Islamic invaders. Medieval vernacular literature is studded with words like Maleksha, Turk, Tatar, Hatyaro, and Ashur for Islamic invaders. Dusra Ada, a poet in Akbar court, is supposed to have written Vrihad Chiatari, a collection of 76 dohas in praise of Maharana Pratap, where he used words like a jackal, dark cloud, and greedy murderer for Akbar, while referring to Pratap as lion, sunlight, and valorous Kshatriya. Which slave could write such derogatory language for their captor and not only stay alive but flourish? The literature of that time kept in invigorating the masses to stand against the dark forces of their oppressions and stay united behind the Hindu kings who were fighting it. The might and penetration of the Hindus and spoken words were used by the Hindus, poets, and masses to the hilt. Fire of resistance against Islamic invader was kept burning by a fiercely honest and creative articulation of the threat to Hindu dharma if Islamic imperialists were not resisted. One doha is being shared to demonstrate the evolution of literature in response to Islam invasion, meaning if someone takes your land, convert your faith, or hurts your women, you should not die resisting these. It does not, you should die resisting these. It does not matter if you are a king or a pauper. Okay. अगर आप आपके किसी धर्म को कन्वर्ट कोई करता है या आपकी स्त्रियों को, महिलाओं को कोई अगर डिसऑनर करता है, तो आप को उनकी रक्षा के लिए, मतलब उनको रोकने के लिए मर भी जाना चाहिए, चाहे आप राजा हो, चाहे आप भिखारी हो. It is obvious that the poet is referring to the Islamic design of converting Hindus or attack on the Hindu women by Islamist army. Hindu theological creativity also continued unabated during these centuries, and thousands of ashrams and mathas spread all over the nations. All over the nations were indulging in uninterpreted pursuit of Hindu religious practices. The Ramcharitmanas, Gita Govind, dozens of tikas and commentaries on the Vedas, Upanishads, and Bhagavad Gita were written in this very phase of Indian history. It is when the Hindu writers, especially Charans and Brahmins, were forced to stop penning the truth of the barbarity of Islamic invasion that the lies of Hindu slavery were invented. अच्छा, जब इन लोगों ने लिखना बंद कर दिया, तब जाकर के इन लोगों ने बोला कि हाँ, हिंदू स्लेव थे.
On their part, Charan too, especially in the post-independence era, stood idle while the leftists erased the glorious Hindu resistance and are partly responsible for the rise of Hindu slavery finding root. The power of spoken and written words was effortlessly taken over by the Islamists masquerading as Bollywood writers. ये उनकी सलीम और जावेद की बात कर रहा लगता है. Writers and sires charming the middle class Hindus with their lies laced in chaste language. The literary and academic capitulation of the Hindu poets and bards is a major reason for the rise of slavery being trumped and resisted. Aurangzeb repentance on his life and deed. History must never imprison us. History must liberate us from our prejudices and blindness and thus help us continue on a trajectory of evolution. The entire saga of Mewar Maharanas, the noble and gallant Samants, and the amazing people of Mewar stands on the singular edifice of opposition to Islamic invasion of the Vedic land and insistent brutal assault by gangsters motivated by blind pursuit of the theological doctrine of monotheism on a people who had already discovered monotheism thousands of years ago, and monotheism too was only one of the ways to explore one's divinity. A people who gave principles of mathematics, the Upanishads, the Gita, and yoga to the world. Such evolved people were brutalized by robbers who used to cover the religion to cause immeasurable suffering not only to Hindus but to the entire globe. In the annals and antiques of Rajasthan, Colonel James Todd quote a letter written by Aurangzeb to his religious teacher Mullah Saleh in Christian era 1684, in which Aurangzeb is livid with his teacher for making him a religious bigot instead of liberal man. Todd narrate that Francois Barrier witnessed this letter being written and preserved it with him. Another letter is by a dying Aurangzeb to his grandson and son. The purpose of sharing the content of this letter is to discover the truth of Aurangzeb's life. The content of this letter is explosive because it destroys the claims of violence and strife as tools to impose an unjust and immoral way of life on others. Aurangzeb is the benchmark of success of Islamists, and if he dies a sorry and dejected man, it should be known to the mullahs and their followers. The content of this letter is sublime because they give hope to mankind that if a hate monger like Aurangzeb can repent his indoctrination, maybe the liberals in Islamic world too can realize the darkness of indoctrination. If all his life living like a model Muslim leads to such a pathetic death of his own words, should not the Muslim world reflect that mayhem, hatreds, and murder that jihadis are causing in the world is all meaningless? Aurangzeb is realized by vast number of Muslims as their Ghazi, a victorious Muslim fighter against non-Muslims. In the first letter, Aurangzeb clearly stated to his religious leader that because of his religious teaching, Aurangzeb missed out on to the beautiful things of life. He never even goes on to blame Saleh for the indoctrination that caused him to be so stone-hearted that he ended up killing his own brothers. Aurangzeb writes, "You told my father, Shahjahan, that you would teach me philosophy. This is true. I remember very well that you have entertained me for many years with airy questions of things that afforded no satisfaction at all to the mind and are of no use in human society. Empty notions and mere fancies that have only this in them, that they are very hard to understand and very easy to forget, which are only capable to tire and spoil a good understanding and to breed an opinion that is unsupportable. I still remember that after you but amused me, all I retained of your philosophy was the multitude of barbaric and dark words proper to bewilder, perplex, and tire out the best wits, and only invented the better to cover the vanity and ignorance of men like yourself, that would make us believe that they know all, and that under those obscure and ambiguous are hid against
mysteries which they alone are capable to understand. मतलब बुढ़ापे में इसको अकल आ गई थी लगता है. Oh. He continued, then lamenting his missing out on the moral, liberal and happier worldview because of his teaching. It is almost as though Aurangzeb is talking about the wisdom of Gita and Upanishad, to which he was surely introduced by his brother Dara Shikoh sometime in his childhood. If you have seasoned me with that philosophy which permits the mind to ratiocination and insensibly accustom it to be satisfied with nothing but solid reason. If you had given me those excellent precepts and doctrines which raise the soul above the salt of fortune and reduce her to an unshakable and always equal temper, and permit her not to be lifted up by prosperity, nor debased by adversity. If you had taken care to give the knowledge of what we are and what are the first principle of things, and had assisted me in forming in my mind a fit idea of the greatness of the universe and of the admiration, order, and motions of the part thereof. If I say you had instilled into me this kind of philosophy, I should think myself incomparably more obliged to you than Alexander was to his Aristotle. This letter is adequate proof that Aurangzeb realized the hollowness of his faith. When he saw the courage and तो तेरे बुद्धि नहीं थी क्या दादा? क्या है नाटक है ये? वो दूसरे को दादा मीना सब कुछ कर लिया और उसके बाद अब मरते वक्त लिख गए. अच्छा, तो आज जो टीवी डिबेट्स में मुसलमान इसके बारे में कोई नहीं बात करते, और हिंदू एंकर जो है वो क्यों नहीं दिखाता भाई मरते दब तो औरंगजेब ये लिख के चला गया. एक वाक्य रखा होगा ना इन लोगों ने कहीं पर, वो तो टॉट ने लिख के रखा था, लेकिन हमारे को भी बताया नहीं कि इतना लास्ट में तो बिल्कुल उसको रिपीट कर रहा था वो, लेकिन फिर भी वो जो ह्यूमन नेचर है ना, गलती क्या कर रहा है उसके ऊपर डाल रहा है, अपने गुरु के ऊपर डाल रहा है. अरे तेरे अंदर बुद्धि नहीं थी क्या? तू चुप हो जाता? जरूरी था किसी कहने पे काम करेगा? This letter is adequate proof of Aurangzeb realized the hollowness of his faith. When he saw the courage and fortitude of the Maharanas and the people of Mewar to fight and die for Hinduism, he was forced to introspect, and there was a higher principle that Hindus were ready to fight and die for. The lives and deeds of Maharana Raj Singh, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Sri Guru Gobind Singh Maharaj, Veer Durga Das, etc. must have shown him the mirror that it was not only Islam that evoked the passion for religion, Hinduism did the same too. But while Hinduism evoked the passion only in times of crisis, as a matter of choice, Aurangzeb's passion was an uncontrollable, mindless, and continuous torment of his being. Aurangzeb goes further to blame Mullah Saleh teaching for his violent temperament. Should not you, instead of your flattery, have taught me somewhere of that point so important to a king, which is what the reciprocal duties are of a sovereign to his subject and those of subject to the sovereign? And ought not you to have considered that one day I should be obliged with the sword to dispute my life and the crown with my brothers? Is not that the destiny almost of all the sons of Hindustan? Go and retire to the village whence you come, and let nobody know who you are or what is become of you. Would also quote a letter of Aurangzeb to his grandson Shah Azim Shah from his deathbed. क्या लिखा भाई इसने आपकी बार? Health to thee. My heart is near thee. Old days have arrived. Weakness subdued me, and strength has forsaken all my members. I came a stranger in this world, and a stranger I depart. I know nothing of myself, what I am, and for what I am destined. I have not been the guardian and protector of the empire. My valuable time has been passed vainly. I brought nothing into this world, and except the infirmities of man, carrying nothing out. I have a dread for my salvation,
and with what torment I will be punished. Though I have a strong resilience on the mercies and bounties of Allah. Allah ही बोलना घाट में लिखा हुआ. Yet regarding my actions, fear will not quit me. Farewell, farewell, farewell. Aurangzeb murdered the Hindus and Muslims of this nation, thinking to be his religious duty. We have dealt in detail with how he murdered Rajput kings, slaughtered villages, and destroyed Hindu temples in blind pursuance of his faith. Most modern-day Muslims and their religious teachers are proud that what Aurangzeb did to Hindus and Hindu temples. The madrasas in the nations teach the plunder caused by Aurangzeb as an example to emulate. Consequently, Islamization of this nation has been an ongoing project from Aurangzeb's demise to the 21st century. As halal economy, love jihad, victimhood, narrative, Sufism, population, inversion, RULLS, RULLS, I don't know what is it. बाद में देखेंगे. जीनो से क्या है यार? What is this? Random, unceasing, low-level, scattered violence. Wow. Random, unceasing, low-level, unscattered violence. अच्छा. Okay. Hindu genocide, Bollywood brainwashing, and underworld blackmail go on unabated. What are the options for Hindus? Morality and righteousness are not inborn in man. These are the traits that the family teaches and society teaches. A word devoid of morality and justice simply cannot survive. If religious zealots read these letters of Aurangzeb and ponder, mankind can progress at an unimaginable speed. The needless investing in defense budgets and securities around the globe can be diverted to pharmaceutical, oceanographic, space, cancer, medicine, and climate research, and we can all progress to a safer, saner, and happier humanity. Hindu kings and Hindu philosophy shook even a fossilized mind like Aurangzeb into contemplating the futility of his action. No slave culture can force a tyrant to submerge in such self-doubt. Slavery only invoked contempt in the heart of the enslaver. That our glorious ancestor fought Aurangzeb, and that within his court and around him millions of Hindus kept practicing their Hindu faith and did not convert, is itself a glaring example of Hindu resistance. Aurangzeb continued hating and killing Hindus in spite of these realizations, but these letters show the spirit consciousness with which he continued his dance of death. Hindu continued to torment him with their resistance and force him to regret his life and deed. No slave ever achieved such a feat. How are the 100 crores today? How are we 100 crores? ये भी एक चीज है. A cursory look at Islamic expansionism in the Middle East revealed that once Islam gains a foothold in society, it soon starts going for a power center either by subjugation or alliance. So, in a matter of decade, all the West Asia became Islamized, with not even a remnant of the past culture left behind. Pagan temples in the Middle East were razed to the ground. Every beautiful sculpture was crushed to dust. Every single symbol of life itself was annihilated in a blind quest to establish dull, sad, and angry monastic society which considered dance, music, and culture as kufr or hearsay. Yet it was Hindu alone who kept on striving through this insistent military onslaught on our people, economy, and culture. We lost entire Hindu, Buddhist, Sikh land to this onslaught and kept shrinking. But 14 centuries is a very, very long time to fight a bigoted masses of people whose singular pursuit was to grab the women and property of affluent Hindus under the car of their expansionist ideology. That Hinduism survived this invasion by motivated psychotic against overwhelming odds speaks volume of the might, resolve, and intelligence of the Hindu. The writer has had the great fortune of serving Hindus and Sikhs refugees from Pakistan migrated to India. हाँ, वो तो तुमने यहाँ पर भी पैसे मांगने के लिए आए थे अभी last Sunday को. One thing that stands out is a steely resolve of these Hindus and Sikhs to forsake everything dear to them, their land, properties, businessmen, memories, and even relatives of the sake of the Dharma.
If we want to understand what Dharma means to most Hindus, we must meet these wonderful Hindus and Sikhs who are migrating from Pakistan and Bangladesh to India, just show that they can remain Hindus. I quote a conversation I had with the Hindu refugees Narayan Bhil few years ago. Narayan's son was kidnapped by jihadis in the district of Rahim Yar Khan in Pakistan, Punjab, where Narayan had a thriving business as a wholesale cloth merchant. Narayan spent his entire life saving and recovered his son from the jaws of jihadis in the northwestern area of Khyber Pakhtunkhwa region of Pakistan. The jihadis had converted the young boy to Islam and were keeping him prisoners in a madrasa. Within months of this incident, Narayan and his entire family migrated to Bharat. I have personally witnessed Narayan struggle to keep his family afloat through a life of poverty and insecurity. Our NGO, Nimittakam supported him all through these years, and today he is the main coordinator of Pakistani Hindu refugee in Jaipur. One day, while talking to him, I asked Narayan, why didn't you read the Kalma and become a Muslim, Narayan? Why choose a life of such hardship and uncertainty when all that was needed of you was to convert your faith and you could have retained your business and family? Jawab kya de raha wo? Narayan looked at me puzzled, contemplated for a second and smugly replied, how can we forsake the dharma of our ancestors, Sahib? I melted when I heard this reply of Narayan. Such utter simplicity and matter of fact understanding of life is a gift not many of us are aware of. I got my answer that day to the question that had intrigued me for decades as to what was the element that kept us Hindu alive through this civilizational battle with Islam, and the answer is the robust understanding of life and its forces by ordinary Hindus. Never did our ancestors allow pseudo-morality to confuse us in the war of thousands years and Islamic invaders. In fact, we choose the morality of the Gita is explained by Sri Krishna, where it was higher duty to kill anyone who violated our women and God. Ahimsa was an immoral argument when confronted by barbarian because Ahimsa in front of murderers is only a cover-up for our cowardice. Our ancestors knew that the sublime principle of Hinduism, Dharma, worth living for, worth fighting for, and if it comes to that, worth dying for. Narayan Bhil is living embodiment of what understanding of Hindu Dharma. He let go of all his worldly possession for the sake of a promise that his glorious ancestor had passed on him through the millennia. This is an amazing loyalty and unfathomable understanding of Sanatana Dharma that has withstood the most violent onslaught on the values and freedom of this great land and continue to do so even today. Why and how of this lie? Okay. Again, this background, we try to find out answer to why did the leftist and Islamist historian of this nation concoct this lie of 1,000 years of Hindu slavery. This prostitute of mind aligned with Islamist expansionism for money and power sold us without our knowledge. What Islamist invader could not achieve through force, they tried to achieve through deceit. What they could not get through the quality of their sword, they tried to get the might of the pen. How else to subvert proud people like Hindus than to turn the entire truth of their glorious resistance to Islam invader right on its head? Islamists have always known as a power of controlling the mind and narrative, even if it is through fear or lies, and in the Bharat, they found allies in the leftist academicians manning almost every educational institution of this nation. The Congress party actively colluded with the leftists in this distortion of history. Rakesh Batapail, in his book JNU, The Making of a University, write that Subhadra Joshi, a Congress MP, took the lead in writing secular history of India in the NCERT books. History is just history. What kind of perverted mind would advocate writing secular or communal history? Leftists provided left Islamists with access, justification, and resources to invent and propagate the lies of Hindu slavery. A look at the speech of Babar on the eve of Battle of Panwa in 1527 is a glaring example how religious zeal can fill even a mentally defeated army to rise and fight. Only this time, the reverse was to be applied to the Hindu population. The lie was circulated so that Hindus are filled with a sense of
inferiority complex and get convinced that the docile, cowardly, inward-looking Hindus was no match to the aggressive, cruel, and extroverted Islamic warriors. Islamic expansionism is a work in ceaseless progress, and the best spell that can explain this phenomena is that of Hydra, a creature that lives in water. Just as a Hydra has multiple head or arms, where it uses one to hypnotize its prey and catch it with the other arms at its stand, mesmerized by the dance. Islamists too put on various kinds of faces when confronted with Hindu resistance. Sorry. In the past 7 decades, especially instead of scholarly, honest analysis of Hindu-Muslim conflict in India, the lies of thousands of years of slavery was invented and circulated. So, the obvious question would be that if Hindus were enslaved, slaves of Islamists, then how come the entire land was not converted? How come 100 crore Hindus still populate this area of the globe? That the lie of thousands years of slavery was possibly inserted into Hindus' consciousness without being questioned also speaks volume of the meritocracy and veracity of Hindu academicians and the political and spiritual leadership of Hindus. Perhaps Hindus got tired of fighting Islam in imperialism or were outdone by the religious zeal of Islamic invaders. Still, the fact of a compromised Hindu leadership cannot be overlooked. Hitler's propaganda minister Joseph Goebbels once said, "You tell a lie 100 times, it becomes the truth." Both Islamic zealots and Hindu thought, or shall we say thoughtless leadership, have worked in cahoot to prove Goebbels right. The end game of Islamists is to take over the resources and land of an unconquered area and convert all the native to their faith. The similar obsessive pursuit has not changed its course in the last 1,400 years. Of course, like a hydra, it keeps changing the means to achieve that end. So sometimes it is the sweet talking, singing, and dancing Sufis that is set to charm fool. Okay, Hindus. At other time, it is spreading lies by controlling the history writer and record keeper, as we see in the extreme biases of Muslim historians like Abdul Fazl and Al-Badawi, who openly use words like soldiers of Islam for Muslim while referring the Hindus as stone-hearted infidels. Sometimes it is the play of the victimhood when the civil war within Mughals and other dynasties would make one of them seek refuge and alliance with Hindu kingdom. Sometimes it is the ploy of tolerance as used by Akbar to buy the loyalties of Jaipur Rajputs and strategies like Todarmal. At other times, it is outright barbarism, like Aurangzeb passing dictate for jizya and plunder of Hindu temples. But every single time, the end game is the same: Islamization of the land through conversion. Our intelligence and brave ancestors understood the truth even in those tough times when there were no effective means of communication and choose to fight it out. Even Muslim thinkers and writers have acknowledged the glorious Hindus' resistance to Islamic invasion and spoke the truth, which our leftist pseudo-liberal historians have tried to erase. That audacious armada of the religion of Hijaz, whose insignia reached every corner of the world, which learned no obstruction from any fear, which felt no hesitation in Persian Gulf or faltered in the Red Sea, which valiantly crossed all the 7 seas. Oh, drowned was the armada of Islam when it reached the mouth of Ganga. Maulana Khwaja Altaf Hussain Ali. James Todd described the resistance of Rajasthan to Islamic imperialism in beautiful words. What nation could have maintained the semblance of civilization, the spirit, or the customs of the forefathers during so many centuries of overwhelming depressions, but one of such similar character as of Rajputs? Rajasthan exhibit the sole example in the history of mankind of a people withstanding every outrage barbarity can inflict, or human nature sustain, from a foe whose religions commander annihilation and a bent to the earth, yet rising buoyant from the pressure of making calamity a whetstone to courage. Todd then goes on to compare his own people. The British kept yielding the oppressors through the ages and rights.
How did the Briton at once sink under the Romans? To the Saxons, they alike succumbed. They again to the Danes, and this heterogeneous breed then succumbed to Romans. Contrast this with Rajputs of Mewar. Not an iota of their religion or custom have they lost. Mewar alone, the sacred bulwark of religion, never compromised her honor for her safety, and still survived her ancient limits. And seen the brave Samar Singh give up his life fighting alongside Prithviraj, the blood of the princes of Mewar has flowed in copious stream for the maintenance of their honor, religions, and independence. This is the British writer penning his thoughts on the people of his own nation, of people his own nation was trying to rule. After careful inspection and piecing together of historical fact, we can reasonably arrive at the deduction that the whole business of Hindu Gulami is a mind game played by the jihadis cabal, facilitated by the conniving leftists of our nation to keep us deluded by a false narrative of inferiority and defeatism. In the Mahabharata, there is a story of King Salya, who was made to steer the chariot of great warrior Karna in the battle. Salya was an arrogant king and Karna was the son of an ordinary person. Throughout the war, Salya kept demoralizing Karna against Arjuna. Karna was rejected by Salya's rant, and eventually this ended with Karna being slain by Arjuna in the war. The leftists have been the Salyas for the Hindus in the past 7 decades. Now it is up to us to deny or believe the lies of 1,000-year slavery being parroted by the Salyas in our minds, in our midst. But if we continue to believe this lie, we must accept that by doing that, we turn our backs to our own glorious past. Believing this lie means disowning the suffering and struggle of the amazing Maharanas and peoples of Mewar. Believing this lie means we are ready to treat on the charred remains of the glorious women and children of Rajasthan who committed Johar to a spurious future. Believing this lie means that our life alone is fine, cannot even bear simple truth which define us. Believing these lies means that Satyameva Jayate is a mere slogan and not a principle worth living and dying for. Believing this lie means to stab the memory of Pratap, who stood absolutely alone to preserve Dharma, but he did not yield. Believing this lie amount to a chuckle shamelessly on the limbs and bodies littered around Khanwa, Haldi Ghati, Devar, Panipat, and hundreds of such places, which only insensitive dolls can do on witnessing on an overwhelming sight. Believing these lies means to mock and ridicule the extreme sacrifices of the unsung people of Bharatvarsha as they silently supported their kings, enduring whatever suffering came along. Believing this lie means looking over our unlived lives and uncared corpses of our courageous ancestors with indifference reserved only for the worst kind of dread. Believing this lie means to actively collaborate with the prostitutes of mind in erasing out sublime past. But we cannot comprehend the truth and stand up unshackle ourselves of this mental albatross of slavery around our neck. We would perhaps have taken the first step to the claim of being heirs of the legacy of giants like Pratap, Rana, Sanga, and Bappa. Only then we can safely say that the lie of 1,000 years of slavery of Hindu is just that, a lie. And lies have consequences, horrible consequences that are borne by the whole society. If we want to evolve as unity and travel towards a brighter, safer, happier future, all civilization lies have to be defeated objectively and comprehensively. Lies can be destroyed by speaking the truth. Lies can be defeated by scholarly research and honest circulation of the truth. That is what the Hindu Samaj needs to do in the 21st century. Speak and broadcast truth from their rooftop, because truth is not negotiable. Truth liberate. Only when we speak and speak the truth shall the true Shakti of our great nation be unleashed, and Hinduism can find its rightful place in the global order. With technology, internet, and the gift of the algorithm, we see today a knowledge economy where information is
democratized. The age of the prostitute and the age of the distortion is reaching the end. Agenda-driven narrative peddled by the lepto-Islamists or the Indologists cannot hide behind fancy creative that portray Hydus as weak and stubborn or proud and courageous resistance against invaders and colonizers, while the rest of the world succumbed to the onslaught of the red and white and green. India stands as a sole beacon of hope, that vestige of civilization that pervaded the entire globe at one point. The hope of revival of civilization ethos and its triumph over advantageous forces is a beautiful hope that can solve and resolve issues as complex as environmental damage, reduction of crime, evolution of humanity's values, and collective growth of spiritual energy that can bring about egalitarian principle to the world again. Sold out media that have been classified as prostitute are the sold out narrative builders in academia who write fake history and are called distorian have to be replaced by truth slayers and intellectual giant with no hidden agenda. Hindu Dharma and individualization are the audacious hope that truth will shine through the darkness of chauvinistic narrative. Satyamev Jayate, let truth alone triumph. The slavery of fellow human being is an evil that cannot be endured at any cost. Slavery is worse than murder because it kills the atma of the individual. Slavery must be fought, whatever be the cost. Our glorious ancestor fought slavery and succeeded. Hindus were not enslaved even for a microsecond. And as long as even one Hindu remembered the truth of Pratap, Hindus will never be enslaved. Har Har Mahadev. Jai Hind. तो क्या बात है, इतिश्री खत्म हो गया भाई, क्या लिखा है। उफ लिंक दो। अच्छा लिखा दादा एंड में ये जी सर दे दीजिए। हिंदुओं के ऊपर है दादा, कितना पढ़ते हैं कितना मानते हैं। बाप रे, ये सबसे बड़ी बात ये पैसे के लिए हमारे जो बंदे हिस्टोरियन है वो सारे बिक गए ना। हाँ बिके हुए। हाँ तो अब अगर राजीव मल्होत्रा जैसे लोग ना हो और या ये जैसे ये लिखा है ऐसे लोग ना हो तो अभी भी मतलब वही हम लोग पढ़ेंगे जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो हमारे को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सबने वो किया था, और बाकी क्या है। दादा उस एक को मजहब ने मजबूर कर रखा था उल्टी सीधी हिस्ट्री लिखने के लिए, दूसरे को पैसे ने। नहीं मजहब, मैं मजहब वाले को तो समझ सकता हूँ कि चलो ठीक है भाई, तू तो मजबूर है क्योंकि तेरा मजहब ये बोलता है, लेकिन मतलब आप अपनी आत्मा को बेच दोगे, मतलब कुछ भी। अभी यार जाओ, ये आदमी डॉक्टर है, ये जाकर के चित्तौड़ में और कुंभलगढ़ में सब जगह स्टडी कर सकता है, तो तुमको तो सारे पैसे मिलते तो तुम यूनिवर्सिटी में बैठे हो, तो मेरे तनख्वाह किस चीज की मिलती है? इसीलिए तो मिलती है, गलत हिस्ट्री लिखने की मिलती है। दादा वो मजहब से मजबूर थे, ये आइडियोलॉजी से मजबूर थे, है तो कम्युनिज्म सेम ही, विदाउट अल्लाह इस्लाम है वो। यस दैट इज द प्रॉब्लम। ये सब जो है ना, इनकी जो माँ के अंदर ना वो जो क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू का स्पर्म घुस गया होगा एक एक करके मादर चौधों के अंदर। जितने भी हिस्टोरियन जेएनयू में बैठे हुए हैं, जितने भी साले डिस्टॉर्टेड दिखते, मैं तो सोचता हूँ कि उनकी मम्मी को जरूर जवाहरलाल नेहरू ने रात को ठोका हो। दादा ये इतने घटिया होते, ये खुद छोड़ आते होंगे। हाँ, ये तो ये जाके उसके यहाँ पर कौन सा वो क्या नाम था, तीन मूर्ति भवन में ये छोड़ जाते होंगे कि यहाँ पे ठीक है, ये आ गई है, लो मेरी मम्मी है या मेरी बीबी है, लगा लो इसको, इसका जो बच्चा पैदा वो हिस्ट्री लिखेगा वो।
आप स्वरा भास्कर को देखो, उसकी माँ इरा भास्कर जेएनयू में प्रोफेसर है ना, किसी उसकी आर्ट्स और उसकी, एक ब्राह्मण होके इस लड़की का वो देखो अल्टीमेटली किससे शादी की इसने। जय भारती साहब, आप ये बताओ, प्रकाश करात और सीताराम येचुरी जेएनयू के दोनों लड़के हैं, मेरे टाइम के हैं वो। जिस समय मैं वहां पर आईआईटी में हुआ करता था उस समय जेएनयू में हुआ करते थे ये लोग। 81 82 की बात बता रहा हूँ मैं, एसएफआई के लीडर हुआ करते थे। अभी जो तमाशा हुआ है न्यूज क्लिक का, जिसको कि चाइना पैसा दिया करता था वाया सिंघम, और वहां पर अभी न्यूज क्लिक के ऊपर वो हो गया, वो जो प्रवीर पुष्कायत जेल में गया, उसका जो मैनेजर है वो भी जेल में चला गया। सीताराम येचुरी के घर में भी रेड हुई थी, वहां पर भी एक बोलता है कॉमरेड, एक कॉमरेड है मेरे घर में रहता था, उसका लड़का है वो जो न्यूज क्लिक में काम करता है। अबे चाइना के कहने पर तुम पाकिस्तान वो अरुणाचल का नक्शा उड़ा दोगे? चाइना के कहने पर तुम, कहने के लिए तुम हिंदू हो लेकिन तुम्हारी तो ऐसी कैसी, तुम तो सारे सबसे बड़े दुश्मन हो। और यही लोग हिस्ट्री लिखते हैं। रोमिला थापर हो गई, वो कौन है, बिपिन चंद्रा, बाल चंद्रा क्या नाम था, आशीष शर्मा, जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक लिखी है सारी, मतलब 2-3 जनरेशन को इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया। अभी दादा कम्युनिस्ट जो है बहुत गंदा जीव होता है, मेरे को परसों मिला था, ठीक है, वो कहता चाइना इज अ गुड कंट्री, तो मैंने कहा आर यू प्रेजी कम्युनिज्म? कहता यस इट इज द बेस्ट थिंग। तो मैंने कहा, कहता कि देश को बेच दिया मोदी ने, लाल किला बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैंने कहा भाई जब बिका होगा तो कुछ पेपर्स बने होंगे, वो पेपर्स दिखा मुझे, ठीक है। तो कहता सीएजी की रिपोर्ट है, इतने लाख करोड़ का घोटाला। तो मैंने कहा भाई सीएजी की रिपोर्ट दे दे मुझे। कहता गूगल पे है। मैंने कहा भाई मेरे को तो नहीं मिल रही, तू निकाल के दे दे। कहता नहीं तुम ढूंढो। मैंने कहा मैं क्यों ढूंढूं, तू जब इल्जाम लगा रहा है तो तू एविडेंस दे मेरे को। कहता हम पढ़े लिखे लोग हैं और मैं जो है बढ़िया बढ़िया चैनल देखता हूँ, ये न्यूज नहीं देखता। मैंने क्या देखता भाई? रवीश कुमार। फिर मैंने कहा 2 टके के यूट्यूबर को देख रहा तू और मुझसे बकवास कर रहा है। हमारे टाइम में जिस समय हम लोगों ने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया था, उस समय सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में लिख के आता था जीएस के लिए आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़नी है। आपको इंडिया का जो वो मैगजीन आता है ना, वो हर साल एक आती, भारत करके क्या आता है, वो कुछ करके आती है, वो पढ़नी है। मनोरमा पढ़ना है। अब मैंने पहली बार सुना कि ये जो ठाकुरता है, ये बंदा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का एडिटर है। कहां लेके जा रहे हो भाई देश को तुम लोग? अब ये जो हमने पढ़ा है, बाप रे, मेरे को तो मतलब पढ़ते पढ़ते आई कुड नॉट स्टॉप, बट रोना आ रहा था कि औरंगजेब खुद रियलाइज कर रहा है कि मैंने गलती की है। और आज की डेट में ये बोलते हैं औरंगजेब गाजी था, तो चूतिया वहां का वो जो बैठा हुआ है बेवकूफ हैदराबाद वाला नालायक, वो हमेशा बोलता है हमने कौन सी गलती कर दी अगर वहां पे चले गए और हमने वहां पर उसके मजार में जाकर के पुल चढ़ा दिए। आप लोग सोच सकते हो अगर मोदी साहब की गवर्नमेंट नहीं होती थी, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती थी और मेजोरिटी के साथ में नहीं होती थी, तो क्या दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदल करके वो जो अभी क्या अब्दुल कलाम जो किया गया है वो रोड होता था? वो भी दादा तारिक फतेह ने आना शुरू किया 2000 ये मोदी गवर्नमेंट के बाद, तो उसने बोला कि तुम्हारे यहाँ पर औरंगजेब रोड है, मेरे पास 7-2 बंदे चले काला पेंट लेके, मैं उसको करता हूँ। तो थोड़ा ट्रैक्शन जो है बना, उसके बाद हुआ ना शुरू। अभी दिल्ली में चले जाओ, साउथ दिल्ली में जितने भी रोड है, ये अकबर रोड, ये हुमायूं रोड, ये शाहजहां रोड, ये जहांगीर रोड, अबे किसने रखा है उसको? दादा वो उसका चीचा थे, बाप थे ना, वो जो चीचा थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, वो उनके बाप थे। हाँ, हिंदुस्तान के रिसोर्सेज पे सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। हाँ, क्योंकि वो कत्ल नहीं कर पाए ना सब लोग, सब हिंदुओं का, तो अब कर ले। तो मैंने जो आधा घंटा पहले बोला था कि जो भी हिंदुइज्म से निकल के कुछ बनाया खत्म हो गया ना, सिखिज्म का
अब कोई सिख ऐसी बात कर सकता है कि जिसकी वजह से सिखिज्म आया, जो परसिक्यूशन इस्लाम ने की, उसका एक फॉलोअर जो भारत का प्रधानमंत्री है वो कह रहा है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज का पहला राइट है। माइनॉरिटीज कौन? पारसीज, नहीं जैन? दादा, वो नहीं, वो माइनॉरिटीज नहीं है। वो माइनॉरिटी सीधा वो होगी जो सेकंड है मेजॉरिटी मुस्लिम होनी की। चाहिए। आप ये देखो ना, ये हाल हो गया है हमारे सिखिज्म का। क्या मिला? चलो आप बन गए प्रधानमंत्री। दादा इसी सब चीज के लिए तो इन्होंने खालिस्तान का बीज बोया था, और किस लिए बोया था? वोट के बना ले लिए ही तो करा था। खालिस्तान। उधर सारे रेफरेंडम कराते फिर रहे भाई कनाडा में, इधर कोई नहीं आ रहा रेफरेंडम करने। पता नहीं भाई, अब मैं तो तो वीजा भी पंजाब में। बंद हो अब तो वीजा भी बंद होने वाले हैं इनके। मारा इनको कांग्रेसियों ने और ये दुश्मन बन गए हैं मोदी के, है दादा? आप लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा ऊपर जाके चाय पी के आता हूँ, मेरा मुंह सूख रहा है। ठीक है दादा। ठीक है, एम दादा जवाब देंगे। किस चीज का जवाब सर? दादा पूछ रहे ना कुछ, जय दादा। प्रदीप, 2 घंटे जब हो जाएंगे तो बंद कर देना। ठीक है। दादा कह रहे कि मारा जो है कांग्रेसियों ने सिखों को दुश्मन मोदी के बने हुए हैं। क्या कांग्रेसी और सिख? हाँ मतलब जो 84 के दंगे हुए उसमें कांग्रेसियों ने मारा सिखों को, और दुश्मन मोदी के बने हुए वो, मतलब उसी पार्टी को वहां जिता रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कह रहा है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती जरा हिलती है। उसका राइट हैंड एक सैम पेट्रोडा 2 साल पहले कहते हैं हुआ तो हुआ। ओपनली कह रहे हैं कि किया। दुश्मन तो मोदी के बने हुए हो। दादा पैसा उनको जहां से आ रहा है वो वहां का गाना गाएंगे ना। चलो, सिखों को अगर पैसा इसी तरह से करना तो फिर क्या रह गया सिखिज्म में? रही से जो कसर थी कुछ नहीं रहा सर। कुछ नहीं दादा, ये मैंने एक्स मुस्लिम चैनल पे बोला, आपने यहाँ भी बोला है। लेट 70s में की बात है, हम स्विमिंग के कंपटीशन में जाया करते नेशनल तालकटोरा स्टेडियम। हमारा एक पीटीआई होता था सेठी, उसने बोला, हम उस समय यंग थे दादा, कोई 12 साल 13 साल जो भी जिस लेवल पे 14-15 साल में, कहता था कि तुम जाओगे राजौरी गार्डन में, हमारा स्कूल था और आसपास के जितने स्कूल से, क्योंकि हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल था तो जोन का वो था, तो हमारा सेठी कहता था यार कि तुम जा रहे हो, लड़कियां भी है तुम्हारे साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सिख को देखना। आज भी मुझे अपने पीटीआई सेठी की बात याद है। उसने क्यों बोला, कि बात होगी 78 79 या 80 की, एग्जैक्ट ईयर नहीं, लेकिन एक्चुअली रिमेम्बर, सिख तुम्हारी मदद करेगा, सिख को देखना। ये हाल था। उसके बाद मैं दिल्ली में जब 80 में जब कॉलेज वाली में आ गया, अर्ली 80s में, वो सिख कोई चढ़ता था कंबल डाल के सर्दियों में, लोग अपनी बसों के उसके नीचे देखो, छोड़ के तो नहीं चला गया। ये हाल हो गया था विद इन 4-5 years। अब वो दादा, वो सिख जो था ना, अब वो सिख रहा नहीं। अब आप दिल्ली में देखो, सही है। हाँ, इनका पहनावा देख लो, और मतलब ठीक है, मेहनती है, बिजनेस है, लेकिन 9-2-11 करने में, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ यूएस का।
मैं कंपनी के लिए काम करता था, वो कार्बोरेटर बनाते थे। वो फोर्ड की एक कार है मस्टैंग, क्लासिकल मस्टैंग, पुरानी टेक्नोलॉजी में ना कार्बोरेटर अभी भी लोगों ने रखे हुए हैं। तो उसके लिए कार्बोरेटर, अमेरिका में तो कार्बोरेटर बैन कर दिए हैं, बनते भी नहीं है। तो ये जो बंदा था वाइट, इसने इंटरनेट से ढूंढ लिया है सरदार को। ये भी इंजीनियर था और इसके भी अपनी मतलब फैमिली बिजनेस है उसका ऑटोमोबाइल्स में। और मैं तो यार वो सरदार का जब मैंने देखा, मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, आई काइंड ऑफ गो थ्रू दैट। जी जी। इतने आया वहां पर, जब मैं न्यू मैक्सिको में था 2 बार आया और मेरी बड़ी खासी झड़प भी हो गई थी उससे। तो मैंने तो साफ उसको बोला था, अपने वो जॉन जो एनएट था, मैं कहा यार दिस गाय इज टेकिंग यू फॉर अ राइड, लाइफ सेंटर इज अप टू यू, यू वांट टू कंटिन्यू कंटिन्यू, अदरवाइज। वो इतना वो हो गया, मेरे को लगा यार सरदार होके, देखो दादा 40 पेन्स उसने भेजे। कोई पेन होता है जो लगता है एक जगह, चलो ठीक है दादा, उसमें से 3 हैं जो स्पेसिफिकेशन में बने हुए हैं, 37 हैं जो बिना स्पेसिफिकेशन के। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये 37 ठीक है कि ये 3 ठीक है, तो मेरे को ये बता दे। अगर तो 3 खराब है तो एक्सेप्टेबल, कि भाई 0.1% 2% जो है वो एक्सेप्टेबल। वहां दादा बात शुरू हुई है। वो मैं मतलब जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, मैंने भी देखा ये सरदार सरदार रहे नहीं, झूठ, फरेब, धोखा, यू नेम इट, एंड दे आर डूइंग इट। सर आप तो दिल्ली में थे, जितना नकली मोटर पार्ट्स का काम ये सब जो है कौन करते हैं। हाँ, ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, वे लोगों को बुरा लगेगा। आप तो जानते ही हो, क्या बताऊं। मैं तो जब पला बड़ा मेरी तो पैदाइश जिंदगी है दादा, इतने सिख मेरे दोस्त। यार गुरुद्वारे जाना है यार, गुरुद्वारे जरूर चलो यार, हम भी चले जाते थे। गुरुद्वारे से तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई गुरुद्वारा जाता है, या मतलब उनका वेशभूषा जो भी मतलब अलग, दे स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, तो फिर ये नकली धंधा क्यों करना। फिर वही कह रहा दादा, मैं भी तो इसलिए मंदिर नहीं जाता ना। आप जाओ वहां पर, जो पंडे और ये जो आपको इस्कॉन का बताता हूँ, ये वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल पाखंडी, पाखंड एक नंबर का, चोर, बदमाश, उचक्के, लुटेरे बैठे हुए हैं। अच्छा, एक सेंटर दूसरे को नहीं मतलब देख पाता, आपस में झगड़ा लड़ाई सब है। रशियन बोलता है जर्मन चोर है, जर्मन बोलता है ब्रिटिश चोर है, ब्रिटिश बोलता है अमेरिकन चोर है। लोग सब मतलब आपस में बांट लिया है ना सेंटर सब। हाँ, अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था कल, ये इंडिया टुडे का कोई वो है, आपसे नाम जानिए, वो कनाडा से किसी कोई सिंगर है, पता कौन सी ग्रेवाल, उसने भी अपना नाम पहला इंग्लिश का रखा हुआ है। एक तो पता नहीं सरदारों को ना अपने नाम इंग्लिश में रखने के बड़े शौक है। वो मैं अपनी माता जी के वो 2009 या मेरे पिताजी 2018 में गए, तो मैं इन 1 or 2 मैं अपने पंडे के पास बैठा हूँ, वो अपना कोई जट सिख आगे, वो होते ना बिल्कुल आगे स्क्वाट करके बैठ गए। तो उन्होंने कहा हाँ सरदार जी बैठो। अरे क्या नाम है? सरदार बोलता है दादा एक मिनट, सरदार बोलता है अंग्रेज सिंह। हाँ हाँ, तो कर्नल जर्नल भी होता है ना नाम। अरे अंग्रेज सिंह, हाँ तो वही अंग्रेज सिंह, तो कर्नल जर्नल ये कोई नाम होता है, मतलब कोई मतलब ही नहीं। वही अंग्रेज सिंह, प्रिंस, ड्यूक, ये सारे नाम हाँ मेरे रहता मतलब देखिए ये मेरे बचपन में भी जितने मतलब अगल बगल में लोग थे वैसे। हनी, ठीक है मॉडर्न बनो जरूर सनी, है, लेकिन अंग्रेजी नाम क्यों रखने की जरूरत है? मतलब या तो नाम सारे वो रखोगे कि जो बिल्कुल यूनिसेक्स है, कोई हरदीप है, कोई हरप्रीत है, चलो ठीक है भाई आपके उसमें है रखो। यार अगर वो नाम नहीं, तो ये जो अपने ग्रेसी सिंह, ये जो हमारी ये जो एक एक्ट्रेस थी ग्रेसी सिंह, जी जी जी, ग्रेसी, नहीं तो फिर सिंह हटा देना चाहिए ना। हाँ, मतलब आप हिंदू नाम नहीं रख सकते। हाँ, मैंने कुछ सिख महिलाएं देखी हैं जिनके नाम बिल्कुल क्या कहते हैं, जो हिंदू नाम होते हैं संस्कृत के,
कहा यार दिस इज गुड यार, बिल्कुल इतनी वो हो गई कि हमारा हिंदुइज्म से कोई लेना देना। इसीलिए मैं दादा कह रहा था, जब आप अपनी जड़ से खुद को अलग कर लेते हो दादा, जब एक शाख मेन पेड़ से टूट जाती है ना, वो शाख सूख जाती है, तो सूखी लकड़ी बन जाती है, वो सिर्फ जलने में काम आती है और बड़ा धुआं देती है, जो धुआं आंखों में लगता है। किंग सिंह साहब कमेंट में लिख रहे हैं सिंह रखना जरूरी है। नहीं रखें, जरूर रखें। मैं सिंह साहब, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप सिंह हो, आप रखो। अरे अगर आपका नाम कुलदीप है तो आप उसको कैरन सिंह क्यों लिख रहे हो? हरविंदर है तो अपने आप को हैरी क्यों कह रहे हो? ये ग्रेसी सिंह क्या होता है? ग्रेस, फ्रॉम द ग्रेस। आपको कोई अपना कोई संस्कृत का या हिंदू नाम, आपको चलो हिंदू छोड़ो, जो आपकी सभ्यता है। सिंह साहब, प्रोफेसर जगबीर सिंह को सुनो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, पीएचडी इन गुरु ग्रंथ साहिब। जी 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 उनको जी। सुनोगे तो आप उनको हेट करोगे, क्योंकि उनके अपने लाइव एग्जांपल है। वो जब पढ़ा रहे प्रेम थे, जी आ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं जी अपनी सर। बात पूरी कर लूं। बिल्कुल। उनके मैंने सारे वीडियो देखे। वो एक बार बता रहे थे कि मैं एक बार पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि अगर आपको सिखिज्म के बारे में पढ़ना है तो आपको जो उनको उनकी बड़ी बहन ने समझाया था, जो संस्कृत में पीएचडी है, जिन्होंने प्रोफेसर जगबीर सिंह की बड़ी बहन ने प्रोफेसर जगबीर सिंह को संस्कृत सिखाई। ये बोला कि अगर आपको सिखिज्म अगर सीख समझना है तो आप पहले ये सनातन धर्म, जो वो क्या कहते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं, दर्शन, उसको समझना पड़ेगा। और सनातन दर्शन को समझने के लिए आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी। दैट्स हाउ, क्योंकि ही वाज अ कम्युनिस्ट इन अर्ली लेट इन टीन्स और 20s तक। इससे मैं तो लेफ्टिस्ट था। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। कमिंग बैक टू हिज लेक्चर, जब इससे बताना शुरू किया तो एक वो जो पंजाबी क्लास, ऑफ कोर्स एक सिख होगा कोई स्टूडेंट, उसने कहा प्रोफेसर साहब आप तो हमको हिंदुइज्म की तरफ ले जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं नहीं ले जा रहा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये खुद वहां जा रही है। कहते हैं इसलिए मैं ज्यादा, क्योंकि लोग पीछे पड़ जाते हैं कि दिस सिख प्रोफेसर इज प्रोपेगेटिंग हिंदुइज्म। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं खुद जितना पढ़ता हूं, इट्स एवरीथिंग लीड्स टू सनातन धर्म। लेकिन अब लोगों ने पसंद नहीं करते सिख, क्योंकि ही इज अ रैशनल गाय। सच बोलो तो आप तनखिया हो गए, आप सिख नहीं हो। ये चल रहा है। चलो प्रेम जी आ गए, प्रेम जी से सुनते हैं। प्रणाम, सत श्री अकाल प्रेम जी। प्रेम जी आपकी आवाज जो है ना, आपके सिग्नल्स में कोई इशू है। जैसे आपकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे वो बैडमिंटन का शटल कॉक का डब्बा नहीं होता, उसको नहीं सर, वो पुराने मिकी माउस। हाँ दादा, मतलब वैसे ही ना, उसमें से टनल से आवाज आती है ना। हाँ हाँ जी, बोर्ड की आवाज है दादा, साफ नहीं आ रही है प्रेम जी। साफ नहीं आ रही। प्रेम जी आप जो कहोगे, आपका एनालिसिस बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन मजा नहीं आएगा सुनने में। हाँ जी प्रेम जी बोलिए। आवाज आ रही है लेकिन प्रेम जी वो मजा नहीं है। प्रेम जी दिक्कत है, आपकी आवाज बड़ी। हाँ प्रेम जी दोबारा जुड़िए। जी जी दोबारा जुड़े सर। देखो मेरा सिखिज्म से, मैंने पहले भी कहा, मेरा सिखिज्म से क्लोज इसलिए क्योंकि मेरे जो पूर्वज, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ 500 साल जो गुरु नानक जी के साथ थे, हमारा तो बड़ा पर्सनल वो है भाई। मेरा एक पूर्वज पीर बाबा शक्तू शाह जी, वो गुरु नानक जी के, और वो एक अंडर सेम गुरु, ठीक है जी। तो अब मैं अगर सिखिज्म को इस हालत में देखता हूँ, मुझे बड़ा
मुझे दुख होता है। बिल्कुल। वो चीज पर्सनल होती है ना, तो उसमें बड़ा दुख होता है कि यार ये क्या हो गया। जी दादा, इसको अभी मैं वो क्लोज कर देता हूँ ना। हाँ ठीक है। तो सभी दर्शकों का धन्यवाद समय देने के लिए। अगले अध्याय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, जय श्री राम।